All those who are preparing for this CLAT examination, or for that matter any similar examination, they must be aware that they are required to have little bit understanding of legal concepts. Now, when we talk of legal concepts, many subjects of law come into the mind. Fortunately for law entrance students, you are not required to study variety of subjects. You are required to study in detail only few subjects. But you should have awareness of various subjects. So that is why what we have done here at Ambition Law Institute, I tell you, we teach certain law subjects in detail, and then when we come to other law subjects, then you make you aware of all those things. Like Hindu law, Muslim law, transfer of property, there are a variety of subjects in law, and you don't know that the questions may come from there as well. But you are not required to be master of any one of them, I must tell you, not even of this Bharatiya Nyaya Sanhita, which was earlier Indian Penal Code. And I hope every student and everybody now living in this part of the world must be aware of what is this Indian Penal Code. The Indian Penal Code, if simply described, means that it's a law which punishes certain crimes. And you must have heard of various crimes. You know of that recently in West Bengal, there was an incidence of rape and murder committed upon a lady doctor. Now the question arises, how will you punish this rape offence? How will you punish this murder offence? And for that matter, there are further questions. How will you decide whether it is a rape offence or murder offence or not? Now, when the question of deciding this comes into mind, that whether this is rape offence or murder offence, then the question of defining that particular crime comes. What is the definition of rape? What is the definition of murder? What are all essential ingredients of rape? What are all essential ingredients of murder? Now, when will you punish a person for rape or for murder? That is the question. But I must tell you, before going into that analysis, that what is exactly rape or what is exactly murder, you should know the basic concepts of law. And when we are talking of this Indian Penal Code, that is now Bharatiya Nyaya Sanhita. Indian Penal Code, that is now Bharatiya Nyaya Sanhita. So when we talk of this Indian Penal Code, then the question comes, what is this crime all about? When can we say that there is a crime? What are the general basic concepts of crime? How do you define a crime? How a layman like us will know that whether it is a crime or whether it is not a crime? I was just reading today, a student studying in 11th class his law material. Schools and colleges, they provide certain basic legal material, and it has been in practice of late that everybody is teaching law nowadays. Even if school is promoting students to study law, there is a subject for legal studies. Even in colleges it is being done. You might have heard of BA Legal Studies. BA Legal Studies is basically a course of Bachelor of Arts where you will be taught law paper. It is not LLB degree, but BA Legal Studies like BA Arts and BA Science, whatever, or BSc Mathematics. So similarly BA Legal Studies. So everybody is aware of law little bit. But when you are asked a precise thing, that what do you mean by crime? How do you define a crime? And how will you know whether it is a crime or not? So I asked that boy that how will you know this? How will you explain it to me? So he said, crime is a legal wrong. So I asked him a very simple question, that whether all legal wrong becomes crime. So he was speechless, answerless, because he is a class 11 student. So he was not aware of that. So I said, let me explain to you what is this crime all about and how a legal wrong can become a criminal wrong. So now here begins the story. Now this is what is called understanding. You are aware of
crime, but whether you understand what is crime or not, I am not sure. So I tell you, now there is legal wrong. Everybody knows of this word, I hope. Legal wrong is any wrong which is basically accepted by law as a wrong, recognized by law as a wrong, punished by law as a wrong, something like that. I am giving you a very hazy idea right now. I am not giving you any precise idea right now, because I do not think that this is proper stage of giving precise idea, because when you go further in law, you will have many precisions. But here just let us have awareness. So you understand, legal wrong means wrong in the eyes of law. There may be many wrong which may not be wrong in the eyes of law. There can be moral wrong. You did not save a person who was dying. Is it a legal wrong? No. Why? Because no law tells you that you save a person or you are under a duty to save a person. If he is drowning, if he is dying, there is no law like this. It's all humanity. It's all morality. So it may be inhuman act. It may be an immoral act. But will it be a legal act? The answer is no. Why? Because it is not a legal wrong. And why it is not a legal wrong? Because law does not make it a wrong. There is no duty upon you and there is no right upon him. So I hope you understand with this basic introduction that if there is a wrong where you are duty bound to do something, or where somebody has a right to get something done for him, then it is legal wrong. Otherwise it is not. मुझे लगता है बहुत लोग पूरी अंग्रेजी नहीं समझ पाते हो, तो उनके लिए मैं बोलता हूं, आप इस बात को समझो कि हर रॉन्ग लीगल रॉन्ग नहीं होता है. मैंने आपको उदाहरण दिया, मान लीजिए कोई व्यक्ति डूब रहा है, आपने उसको नहीं बचाया, तो क्या ये लीगल रॉन्ग कहलाएगा? नहीं. ये तब लीगल रॉन्ग होता जब आप पे एक ड्यूटी होती, भाई तुम्हें सरकार ने नियुक्त किया है या किसी संस्था ने नियुक्त किया और तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम इस व्यक्ति को बचाओ, और तुमने नहीं बचाया, तो इट इज ए केस ऑफ ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ दैट लॉ प्रेस्क्राइब्ड बाय दैट लॉ, and you will be considered a person committing that legal wrong because there is a law behind it. तो जब तक लॉ नहीं होगा तब तक लीगल रॉन्ग नहीं होगा. रॉन्ग हो सकता है. मैंने कहा आप एक डूबते हुए व्यक्ति को नहीं बचाए, ये मोरल रॉन्ग होगा, आपको बचाना चाहिए था. एक भूखा व्यक्ति, आपने उसको भोजन नहीं दिया, एंड यू सी दैट ही इज डाइंग ऑफ हंगर, उसको बहुत भूख लगी हो बट आपने भोजन नहीं दिया. इज इट ए लीगल रॉन्ग? नो. No, it will be legal wrong when there is law behind it. जैसे मैं एक टीचर हूं, मुझे दिखता है कि भाई इस बच्चे को लॉ की जानकारी चाहिए या कोई ज्ञान चाहिए, मैं उसको ज्ञान नहीं देता हूं. क्या मैंने कोई लीगल रॉन्ग किया? नो, आई एम नॉट अंडर ए ड्यूटी. द्रोणाचार्य ने कर्ण को नई शिक्षा दी. Did he commit a legal wrong? No, because he was not under duty. But suppose I have entered into a contract with you and I do not perform my part of contract, and there is a contract for this teaching you, training you, guiding you for CLAT LLB examination or for ILET examination or for any other law entrance examination. And I have entered into contract with you. And I do not teach you with perfection. I do not teach you with precision. I do not give you every information which should have been imparted to you. So am I committing a legal wrong or not? Answer is yes. Answer is yes, because there is a duty and duty is prescribed by the contract. And contract is a legal arrangement. Contract को हम लोग अभी आप जब लॉ के विद्यार्थी बनेंगे तो पढ़ेंगे हम लोग बहुत समय कॉन्ट्रैक्ट को प्राइवेट लेजिस्लेशन कहते हैं. अब देखिए, आप लॉ जब भी पढ़ो ना तो आपको हर शब्द की व्याख्या आनी चाहिए. क्यों प्राइवेट लेजिस्लेशन कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि प्राइवेट पक्षकारों ने मिल करके एक लेजिस्लेशन बनाया.
अब जो भी उसमें वायलेट करे वो उसका ना लीगल रॉन्ग उसके द्वारा कहा जाएगा. बहुत सिंपल है. बट इट इज नॉट ए क्रिमिनल रॉन्ग. व्हाट रॉन्ग इज दिस? दिस इज ए सिविल रॉन्ग. नाउ देन देयर इज फर्दर क्वेश्चन दैट yes, I understood little bit what is legal wrong, but will you tell me what is civil wrong and what is criminal wrong? How do you decipher? How do you distinguish that what is civil wrong and what is criminal wrong? How will I know? How will a student who is entering into the arena of legal realm, he or she will understand this? I tell you a very simple thing. I'll not tell you that what is the difference between the two. I'll create a situation whereby you will understand what is the difference between the two. And this is the best method of learning. And that is what I have understood during last 35 years of my teaching. So that is what I am imparting to you. So how will I explain this? I'll give you a very simple example, which I gave to that boy also. I asked him a very simple question. You might have seen these days people are always on the mobile phone while walking, while talking now, though it is not very welcome thing, but they are habituated to it, wrong, right, whatever it is. So suppose you are doing something on your mobile phone and you are moving. Is this all right? And you are moving and you happen to hit somebody. आपने किसी को धक्का दे दिया. That person fell due to your hitting. It was not deliberate, it was not intentional, it was unintentional hitting. You said him sorry, you got him treated as well, he suffered some injury. Unfortunately, he suffered head injury, which was dangerous. He was hospitalized. You gave him proper treatment as well. You took him to the hospital. आप उसको अस्पताल ले गए, अच्छी तरह से उसका इलाज कराया, सब कुछ कराया. उसका नुकसान भी हो गया, आपने उसकी भरपाई भी कर दी, कंपनसेशन दे दिया. But question, is it criminal wrong? The answer is clear no. So how did you reach to this judgment that it is not a criminal wrong? Now I give you another situation. Suppose you are moving on the road, somebody is coming from the opposite side and you happen to hit him by force. You give him a fist blow with all force. So if you give a fist blow to somebody with all force, with all might which you might have possessed at that particular point of time, what will happen? The person will again fall. अब यदि वो व्यक्ति गिर गया, again he suffered head injury. फिर से उसके सर में चोट लग गई, फिर से उसका इलाज कराया गया, पुलिस आ गई, पुलिस ने आपके खिलाफ एक रिपोर्ट लिख दिया. इस आदमी ने उसको मारा और इसके मारने के कारण उसको बहुत इंजरी हुई, ब्लीडिंग हुई, एंड ही सफर्ड ग्रीवस इंजरी एंड ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड. And now what the facts show that he has been hospitalized for last 30 days and he is still being treated. Now tell me, in this second situation, is it criminal wrong or not? I hope most of you will say that yes, it is criminal wrong. But how did you reach to this conclusion that it is criminal wrong? What is the difference between situation 1 and situation 2? Here comes the difference between civil wrong and criminal wrong. And what is the difference? Let me tell you, many people are answering right now and correctly so. The difference is that in the second case, it was intentional, it was deliberate, it was malicious. But in the first situation, it was unintentional, involuntary, not malicious, it was accidental. We'll describe it by various nomenclatures. It was unfortunate in the first situation. It was accidental, it was unintentional, it was involuntary, it was devoid of any mens rea in first situation. And in the second situation, it is all there. It is all there.
there is mens rea, there is intention, there is malice, there is bad faith, everything, whatever. I'm speaking not with precision, I'm speaking loosely, lightly. I hope I am able to communicate and you are understanding what I am trying to convey. So in the second situation, it's a criminal wrong. Now see, in both the situation, there is a fundamental, foundational difference. And that is very, very simple. And what is the difference? In the second situation, it was intentional. In the first situation, it was not so. So what is the central point of difference between the two? Intentional act. That is what is called in legal language mens rea. Guilty intention, criminal mind, wrongful intention. So this guilty mind, wrongful intention makes it criminal. So no mens rea, no crime. Now when you take it to higher level, see, this is we are dealing with right now at base level. Now as you move further, you will be talking little legally. So if I have to speak it to other people, I remember I taught this CLAT batch many years back, but now I have got brilliant teachers and they are doing their wonderful work. But when I have to interact with the student at this level, I have to come down and I have to make my language very simple and very comprehensible to the student of your class. So that is what I am trying to convey. But suppose I have to speak this situation legally, what I will say, I will say actus non facit reum nisi mensit rea. It means an act does not become illegal or does not become criminal unless and until it is supported by guilty mind. This is a legal maxim. You should not worry right now. I am not dictating you anything. It's all written there in your material, the beautiful material which you might be purchasing right now. Actus non facit reum nisi mens sit rea. What does it mean? I said act does not become criminal unless and until supported by criminal mind. And this is the two situations which is explaining this point to you. So if I have to write this, actus nisi mens sit rea. It means act does not constitute crime unless and until supported by guilty mind. So guilty mind is the central point. No guilty mind. See, fortunately, unfortunately, you must be aware. Suppose I want to commit a crime. How will you commit a crime? First and foremost, you should have guilty mind. If you want to understand the law, apply this method. And this method is basically method of practical to theory. So what is practical? I tell you, suppose I am a boy of 10 years and I am little greedy. Suppose I said, I am neither of 10 years nor I am greedy. But I said, suppose I saw you using a beautiful pen and I am not so affluent to buy such pen. But I am fond of pens. I want to have similar pen. So now what will happen? I will think how to take this pen, how to get this pen. So I will develop a criminal intention. इस पेन को किसी तरह से चुराते. This is what is called criminal intention in the legal language. This is what is called in Hindi
चोरी कहां से? In English, this is intention to steal. And in Latin, this is animo, furendi. So you can raise your level now slowly and steadily. चुराने कहां से? आप समझ रहे होंगे। मेरे मन में भाव आया कि मुझे ये पेन चाहिए, बहुत सुंदर लग रहा है, तो मैं इसको चुराऊंगा। मेरे पास वो पेन है नहीं। जो चीजें आपके पास नहीं होती है, दूसरे के पास होती है, वो आपको बहुत आकर्षित करती है। इट्स बट ह्यूमन। जब आप बड़े होंगे, जब आप समझदार हो जाएंगे, आप बहुत लोग समझदार होंगे भी, मुझे नहीं पता है, तो आपके मन में ऐसा भाव नहीं आएगा। यू नो, पर द्रव्येषु लोष्ठवत्, दूसरे की संपत्ति को मिट्टी के समान समझना है। दिस इज व्हाट इज सेड इन एज ओल्ड वैदिक टेक्स्ट एटसेट्रा, बट आई एम नॉट हियर टू टीच यू वेदास। आई एम जस्ट टेलिंग यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल। आपने देखा कि बहुत सुंदर पेन है इनके हाथ में, मुझे वो वाला पेन चाहिए। आपके मन में चोरी कहां से आएगा? इसी को हम लोग मेंसिया कहते हैं, गिल्टी माइंड कहते हैं। और जैसे ही गिल्टी माइंड होता है, गिल्टी माइंड बिगेट्स गिल्टी एक्ट। अब चोरी कहां से तो आ गया, तो अब चुराएंगे उसको। अब चुराने का उपाय लगाएंगे, देखेंगे, मौके की तलाश में रहेंगे, कब चुराएं, कैसे चुराएं, क्या करें। देखेंगे कब वो गया, पेन छोड़ करके मैं चुपके से जाऊंगा, लेके आ जाऊंगा। तो इसीलिए बना चोरी चुपके। चोरी कैसे होती है? चुपके, छिपके। अब जब पढ़ेंगे ना, आईपीसी आपको पढ़ाया जाएगा, जब आप आगे पढ़ेंगे, तो सेक्शन 378 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 डिफाइंस व्हाट इज थेफ्ट। एंड इफ यू रीड इन भारतीय न्याय संहिता, राइट नाउ इट इज सेक्शन 303। आपको याद नहीं करना, मुझे याद हो जाती है, बिकॉज मैं इससे डील करता हूं और मैं उसको पढ़ाता हूं, कई बार पढ़ाता हूं, किताबें भी लिखता हूं, बैरक भी लिखता हूं, तो मैं ये काम दिन रात करता हूं, इसलिए मुझे याद है। मैं आज भी उसके 50 डिसीजन पढ़ाऊंगा सुबह में, क्योंकि मैं एक बुक एडिट कर रहा हूं केस लॉ का, तो मेरे को पढ़ना है बार बार, तो मुझे याद हो जाती है। आप ये प्रयास मत करिएगा, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू, बट यू विल रिमेंबर इट वेरी इजीली। इट्स नथिंग ग्रेट। प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन perfect, not nobody is perfect, but practice makes a person better. So I am little better, but you will be also better, maybe best also. So don't worry about that. So what I said कि क्राइम कैसे होता है, क्राइम के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो सबसे पहले समझो कि सबसे पहले गिल्टी माइंड आएगा। गिल्टी माइंड से आप प्रेरित होकर के एक्ट करोगे। अब एक्ट में क्या क्या आएगा, जरा ध्यान से सोचो। तो सबसे पहले आया साहब, आपने पेन को देखा, आप चुराने का प्रयत्न करेंगे, तो आप उसके लिए ट्राई मारेंगे। जैसे आपको एग्जाम देना है, तो आप प्रिपरेशन शुरू करते हो, तो उसका प्रिपरेशन शुरू करोगे, मौके की तलाश में रहोगे, कब वो आदमी पेन छोड़ के जाएगा, कहां रखता है, मैं जाऊंगा चुपके से उठा लाऊंगा। तो दैट इज व्हाट इज प्रिपरेशन। यू आर डिवाइडिंग मीन्स एंड मैकेनिज्म टू कमिट ए क्राइम, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रिपरेशन। देन कम्स अटेम्प्ट, अब आप प्रयास करेंगे। जैसे एग्जाम देना है, तो पहले आपने प्लानिंग की और आप मेरे पास आ गए, अब हम आपको पढ़ाएंगे, तो आपका प्रिपरेशन होगा। फिर आप एग्जाम में जाएंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो तीसरा स्टेज आ गया अटेम्प्ट। और जब अटेम्प्ट करेंगे और सफल हो जाएंगे, इट विल बी क्राइम। नहीं सफल होंगे तो अटेम्प्ट रह जाएगा। तो सी व्हाट आई टोल्ड यू, दैट एवरी क्राइम हैज 4 स्टेजेस: criminal intention, preparation, attempt and commission. Nothing great in this, I am just making you aware. These are like 4 ladders. You are here, this is I said just now, criminal intention. Then there is preparation, then there is attempt, and then there is crime. Intention, preparation, attempt and commission. It is called commission. You write here commission. Then there will be crime, commission of crime. This is intention, this is preparation, this is attempt, this is commission. So this is IPAC. And earlier it was IPC, now it is BNS. So in IPC there is IPC and then in between there is A also. IPAC, intention, preparation, attempt, commission. This is what is crime. These are essentials of a crime. I am just making you aware of what is basically crime all about. Now you have understood this point, but we left that point where we began. I said, while comparing the 2 situations, that see, in first situation, where a person unfortunately happens to hit somebody
and that somebody is hit and injured, but it's a civil wrong. But in the second case, where he has hit him deliberately with a fist blow, and he happens to be hit and he happens to be injured severely, he's taken to the hospital, police case is filed, now it is criminal. So I raised the question, what is the difference between the two situations? You answered the question and you said the difference is of intention. Agreed. Agreed. This is criminal wrong. But if I am asked a question next, that how will you define this criminal wrong? How do you define a crime? I have just explained. See, there can be various definitions of anything. I can define a crime like this also. A wrong where there is intentional preparation and attempt also, and it results into commission of crime. This is nothing but a crime. I can define like this. So, if you want to define something, you pick the essentials and you can prepare a definition. But there are other better definitions of crime, where many characteristics of crimes have been described. I'll tell you very beautiful, small story to understand the crime. See, picking those two situations. In first situation, you said, I happened to hit somebody unfortunately while I was busy on phone, so it is not a criminal wrong. But in the second case, where somebody happens to hit him by fist blow and he is injured, this is criminal wrong. Now, what is the difference between the two situations? The difference is this, that see, and this is how will you understand what is crime. One difference is of criminal intention, there is no doubt. That is why in every crime there is intention, there is criminal intention. No crime, I have just said, actus non facit reum nisi mens sit rea, which means that act does not constitute crime unless and until it is supported by guilty mind. So, guilty mind is a necessity in constitution of crime. But what apart from that? I tell you, there are many external factors which are required to be taken into account and which are required to be considered. See, there can be various kind of wrong which might be committed against you, against me, against anyone. You must be aware that how this law has come into existence. This has come into existence as the people were in nomadic state earlier, then they gathered somewhere, they developed a society, then they felt that there should be a system. I hope everybody is aware of this fact. Are you aware or not? That people were nomads earlier. They were moving from one place to another with no fixed habitation, no fixed residence. Then later on, civilization developed near water body, generally near rivers, and they established themselves there, and then they started living in community, society, you know all this. This is a very basic point. But I tell you, the fundamental point is there, that when you started living together, then you felt need of a system where everybody's conduct will be regulated. Otherwise, what will happen? Might is right. Might is right means one who is more powerful, one who is mighty, he will prevail over others. So this is not a good situation. So what will you do? What will you do then? Then we developed a system whereby we decided, you listen to me carefully. This is a very important point which many people do not know even after passing LLB. I tell you, because I have many interaction with many students. You must have heard crime is a public wrong. You must have heard that crime is an offense against the entire state. How it is so, I am not aware. How it is so? Crime is a public wrong and this other wrong is civil wrong, which is not public wrong. Now, what are you saying? Private wrong? Why it is public? Why it is private? Why are you calling it public wrong? Why are you calling it a private wrong? I tell you the basic point, and here lies the difference between civil and criminal. See, you have many interests.
You have many interests. You have interest in your property, you have interest in your body, you have interest in your reputation. Suppose somebody comes and does something against your body, will you feel bad about it or not? You do not want anybody to touch you. You do not want anybody to touch your property without your permission. So these are your interests. And how these are your interests? Because law has recognized this interest in certain laws. Either in this law or in that law, these interests are recognized. Even in criminal law, we recognize this interest. We recognize this interest. So these interests are called legal interests. And this legal interest will give rise to legal right in your favor. What is right? Right is a legally recognized and protected interest. Suppose I say that I have right in my body. What does it mean? That law has recognized my interest in my body, and the law has ensured that nobody should interfere with my body. So this is recognized by law, this is protected by law, and this is how it becomes a legal right for me. So what is right? Legally recognized and protected interest. Wherever law recognizes your interest and protects your interest, it becomes a right in your favor. You understand little bit? What is duty? Now when you have a right, others have duty. So if law recognizes duty in your favor, there is corresponding duty on others that they will not interfere with your right. Otherwise, right has no meaning. If I have right, but it has no protection, it has no meaning. So we create duty as well. You understand? Very well. You do not understand? Even then don't worry. We are not discussing right and duty here, my dear friend. I am not telling you jurisprudence. It's a topic in jurisprudence which you will read when you will become LLB students. I am not dealing with that right. I am just making you aware of what is your right. So right is legally recognized and protected interest. See, this is a pen. So my interest is recognized in this pen because I have bought this pen, I have paid money for this pen, and law says that I will protect you. How will you protect this? So law says that if anybody takes this pen without your permission, I will charge him for theft. This is how I have got protection. And this is how now the other person has got a duty not to take away this pen without my permission. So he is under duty and I have right. It's very simple. You understand well and good. You do not understand, don't bother. There will be 1,000 examples like this. So what I was telling you, my dear friend, that see, we began as nomads, wanderers. Then we settled somewhere. We settled somewhere. Now see, when people are in group, there will be some kind of controversy. Somebody will fight for food, somebody will fight for land, and somebody will fight for other interests. Even still it is happening these days. So what will happen? There is bound to be conflict. So to resolve this conflict, what we do? We make an arrangement. जैसे हमने आपने मिलके कॉन्ट्रैक्ट साझा कर लिया, एक साइन कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, समझौता कर लिया, मुजबानी भी देखो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम मुझे परेशान नहीं। अच्छा सपोज करो वी हैव एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम मुझे परेशान नहीं करो, बट फिर भी हमने तुम्हें परेशान कर दिया. व्हाट इज द रेमेडी? So for this purpose what we did, हमने एक सुपीरियर अथॉरिटी बनाया. देखो भाई ये समझौते से नहीं चलेगा, बहुत मोटी मोटी बात बता रहा हूं, समझ में आनी चाहिए, नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछोगे फिर बाद में. हम सबने मिलके, सपोज करो हम समाज में रह रहे हैं, हम ही हैं, पूरा विश्व हम ही यहां बैठे हैं इस क्लास में. हमने आपने मिलके एक समझौता कर लिया, हम तुम्हारे इंटरेस्ट को हार्म नहीं करेंगे, तुम मुझे नहीं करोगे, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम मुझे नहीं करना, बट फिर भी मैंने आपको परेशान कर. अब क्या रेमेडी है? तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा उसके लिए हम एक सुपीरियर अथॉरिटी बना देते हैं जो हमारे आपके बीच में कोई विवाद होगा तो उसको सुलझाएगा. इज दिस क्लियर? दिस इज हाउ सॉवरेन एंड स्टेट कैम इनटू इट. मोटी मोटी बात बता रहा हूं, जो जानते हैं बहुत अच्छा है, नहीं जानते हैं तो बस कहानी की तरह इसको सुनना है. आप क्या बना दिया? एक स्टेट या सॉवरेन बना दिया.
यानी एक सिस्टम क्रिएट कर दिया कि इफ आई इंटरफेयर विद योर राइट, that is if I do not perform my duty not to harm your interest, then you can knock the door of state, you can go to legal system, you can go to sovereign, you can complain against me, and for that I will be punished, prosecuted, whatever. तो इस तरह से लॉ का सर्जन हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से सपोज करो वी आर वेरियस इंडिविजुअल्स लिविंग इन कम्युनिटी, हम पहले आपस में समझौता किए, हम मिलजुल के रहेंगे, एंड वी वर लिविंग पीसफुली, बट एज दिस ग्रू फर्दर इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट, एंड ये डिफिकल्ट से और डिफिकल्ट होता गया, और डिफिकल्ट होता गया। भाई अब तो बहुत लोग हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे, अब तो बहुत बहुत लाखों करोड़ों अब लोग हो गए, अब कैसे करो। तो इसके लिए मैंने कहा हमने एक बना दिया स्टेट, और स्टेट को अधिकार दे दिया हमारे ऊपर कि भाई अब यदि इसमें से कोई गलती करेगा तो आप इनको पनिश करो। ठीक है, तो इंटरेस्ट तो मेरा स्टेट के बिना भी था, मेरा बॉडी पहले भी था, स्टेट आया तो भी मेरी बॉडी है। अब बात को जरा ध्यान से सुनना मेरी, मैं क्या कह रहा हूं। सो अर्लियर ऑल्सो आई हैड राइट whether there was a state or not. Today also I have right. So what is the difference? Difference is this, that see, today you are Indian citizen. Most of you, I hope you are Indian citizen. Somebody may not be, so don't bother about that. But you are Indian citizen. So what is the guarantee given by this country? वही देखो तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं करेगा, और कोई करता है तो I will come to your rescue. Just try to understand. ये तुम भी अपने आप को गारंटी दे रहे हो कि तुम्हारे खिलाफ कोई भी कुछ करेगा तो तुम उसके खिलाफ एक्शन लोगे। यदि कोई तुम्हें, मान लो तुम्हारा कोई सामान ले जाना चाहे, तुम ले जाने दोगे? यू विल हैव डिफेंस। तुम अपने से तो करोगे प्रतिरोध, प्रतिकार, व्हाटएवर, तुम अपना सेफ्टी डिफेंस तो करोगे, वो तो करोगे। स्टेट ने क्या किया, स्टेट ने कहा देखो भाई ऐसा है कि तुम हमारे स्टेट के सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट समझते हो ना, नागरिक को कह रहे हैं, स्टेट समझ रहे हो, जैसे इंडिया एक स्टेट है। तो इंडिया ने आपको क्या प्रॉमिस किया, हर कंट्री अपने नागरिक को कर रही है। भी देखो कोई भी तुम्हारे इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ करेगा तो मैं तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए आऊंगा। इज दिस क्लियर? और ऐसा होता भी है। सपोज आपकी कोई, आप अभी रास्ते में जा रहे थे, कोई मोबाइल छीन लिया, ध्यान रखिएगा, लोग मोबाइल को लेके बाहर में बहुत घूमते हैं, हाथ में लेके चलते हैं, कोई भी मोबाइल लेके चला जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नैचिंग। नाउ देयर इज ए स्पेसिफिक ऑफेंस फॉर दिस इन न्यू बीएनएस। आपको पता नहीं है तो जान लीजिए, स्नैचिंग इज ए न्यू ऑफेंस इन बीएनएस, नया एक अपराध बन गया। इसीलिए बनाया कि स्नैचिंग की घटनाएं बहुत बढ़ रही। अब जब स्नैचिंग था, आपका वो छीन के ले गया, अब आप तो कुछ नहीं कर पाओगे, आपके पास इतना बड़ा सिस्टम तो है नहीं, और वो बहुत माइटी है, मान लो बहुत पावरफुल है, खली की तरह बली है। सो कैन यू फाइट विद हिम? एंड ही सेज नथिंग डूइंग, नहीं दूंगा, कर लो जो करना है। अभी अभी कितनी मुश्किल से आपने वो 50,000 रुपए का मोबाइल खरीदा, आईफोन 19, इतने मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ के आपने खरीदे थे, और अभी छीन के ले गया, और आपके घर के आगे ही रहता है, कह रहा है नहीं दूंगा, कर लो जो करना है। व्हाट विल यू डू? सो हियर कम्स द स्टेट। यू विल गो टू पुलिस वाला, यू विल इन्फॉर्म द पुलिस, यू विल रजिस्टर एन एफआईआर। अब देखो यहां सीआरपीसी आ जाती, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, जो आप सुनते हो, आप सब कुछ पढ़ लोगे। लॉ बड़ा सरल विषय है, ओनली थिंग इज यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। अब क्या होगा, पुलिस विल इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन, पुलिस विल फाइल चार्जशीट, उसके ऊपर ट्रायल होगा, प्रोसिक्यूशन होगा, कन्विक्शन होगा, उसको पनिश किया जाएगा। क्यों कर रहे हैं ये सब? क्योंकि स्टेट ने आपको कहा कि भाई देखो तुम मेरे सब्जेक्ट हो, इसलिए तुम्हें ये गारंटी हम देते हैं कि तुम्हारा कोई भी सामान छीनेगा, तुम्हारा कोई भी हित, तुम्हारे खिलाफ कोई भी काम करेगा, हम तुम्हारे रेस्क्यू के लिए आएंगे। जैसे तुम्हारे माँ पिताजी आते हैं ना, जैसे तुम्हें कोई हार्म करेगा तो कौन आएगा सबसे पहले? तुम्हारे पेरेंट्स। तो स्टेट भी तुम्हारा पेरेंट्स है।
Parents patriae. Your nation is your parents. If you go abroad, suppose you have gone to China, and there some harm is caused to you, who will come to your rescue? अब वहां तुम्हारे पेरेंट्स की तो चलेगी नहीं, तो योर कंट्री विल कम टू रेस्क्यू यू. अब बाहर में विदेशों में फंस जाते तो कौन आता है आपके लिए? कंट्री आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है. तो आप बात को समझो, जो आपका इंटरेस्ट है आपके बॉडी में, आपके प्रॉपर्टी में, आपके रेपुटेशन में, स्टेट के, चूंकि आप सिटीजन हो, आप इंडिया के सिटीजन हो, तो इंडिया आपको ये कहता है, इंडियन स्टेट कहता है कि देखिए सो एंड सो, यदि आपका कोई प्रॉपर्टी छीनता है, कोई आपको हार्म करता है, तो मैं आपके रेस्क्यू के लिए आऊंगा. एंड हियर कम्स द क्राइम. व्हाई? आई टेल यू. स्टेट कैसे आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा? देखो, आप भी तो अपने लिए कर ही रहे थे, आप भी चाहते थे आप अपना मोबाइल ले लो, लेकिन आप नहीं ले पाए. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो यू फेल्ड इन मेनी सिचुएशंस, यू विल फेल. आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज ही इज माइटी, ही इज दादा ऑफ द सराउंडिंग. यू कांट फाइट विद हिम. But law is a powerful tool which gives you might to fight and right to fight. अब यहीं पे आता है स्टेट की, तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट है, स्टेट क्या करता है? आपके कुछ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का वादा करता है. क्यों? क्योंकि आपने स्टेट की सॉवरेनिटी को स्वीकार कर लिया और स्टेट ने आपको सब्जेक्ट मान लिया. जैसे मान लो आप यहां बैठे हो, मैं स्टेट हूं, मैंने कहा देखो भाई हमारे यहां तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा कोई इंटरेस्ट हार्म होगा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा. मैंने ऐसा गारंटी आपको दे दिया. तो कल को कोई आपका हार्म करेगा इंटरेस्ट, आई विल कम टू योर रेस्क्यू और नॉट. सो सेम टास्क इज देयर विद द स्टेट. इंडिया ने आपको, ये एक इंप्लाइड प्रॉमिस है. यू हैव एक्सेप्टेड इंडियन नेशनैलिटी, यू हैव एक्सेप्टेड इंडियन सिटीजनशिप. इट मीन्स इंडियन गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड or given you guarantee in the sense that if something is done wrong to you, I will come to your rescue. ये डोमेस्टिक लेवल पे भी है और इंटरनेशनल लेवल पे भी है. तो इंडियन गवर्नमेंट साहब कहती है कि हम अपने हर नागरिक की सुरक्षा करेंगे, तो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा. तो इसी आधार पर क्या हुआ कि लॉ ने आपके कई सारे इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज किया एंड लॉ ने कहा हम इन सबों को प्रोटेक्ट करेंगे. स्टेट ने कहा प्रोटेक्ट करेंगे. अब यदि स्टेट को प्रोटेक्ट करने वाला, सपोज करो स्टेट वांट्स टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी, स्टेट वांट्स टू प्रोटेक्ट योर बॉडी, स्टेट वांट्स टू प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन, हाउ कैन इट डू सो? हाउ विल इट डू सो? एंड हाउ कैन इट डू सो? कैसे करेगा स्टेट? स्टेट इज नॉट एवरीवेयर. डज पुलिस स्टैंड एवरीवेयर? क्या पुलिस हर जगह पहुंच जाएगी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए? तो स्टेट को एक ऐसा मैकेनिज्म पैदा करना है जिससे लोग डरें और लोग आपको हार्म ना करें. तो स्टेट ने क्या करना है? एक डर पैदा करना. आप मेरी बात समझ रहे हो? एंड हियर कम्स द पीनल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ. अब स्टेट कहता है हम एक ऐसा लॉ बनाएंगे जिसमें सभी को पनिश किया जाएगा यदि मेरे किसी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो. तो स्टेट ने एक लॉ बना दिया जिसको आप कहते हैं क्रिमिनल लॉ, और स्टेट ने उस वायलेशन ऑफ इंटरेस्ट को डिक्लेयर कर दिया क्राइम. जैसे आपके बॉडी को कोई हार्म करेगा तो स्टेट उसको क्राइम मानता है. आपके प्रॉपर्टी को कोई छीन ले जाएगा, स्टेट उसको क्राइम मानता है. आपके रेपुटेशन को कोई हार्म करेगा, स्टेट उसको क्राइम मानता है. और स्टेट कहता है जो भी ऐसा करेगा उसको हम पनिश करेंगे. Now here comes the criminal law. प्रोटेक्ट तो आप भी अपना इंटरेस्ट कर रहे हो. आपने भी सोचा हम अपना मोबाइल फोन बचा ले, लेकिन नहीं बचा पाए. अब आपके पास पनिशमेंट का अधिकार नहीं. आपके पास क्या अधिकार है? आप एक इंडिविजुअल हैं. आपके पास सिर्फ यह अधिकार है कि आप कंपनसेशन मांग सकते हो. आपकी कोई प्रॉपर्टी ले लेता है, आप उससे कंपनसेशन ले सकते हो. आप उसको पनिश नहीं कर सकते, और यदि पनिश करते हो तो यू आर डूइंग अगेन अनदर रॉन्ग, क्योंकि आपको पनिशमेंट का अधिकार
पनिशमेंट का अधिकार किसको है और क्यों है? अब देखो, स्टेट ने कहा तो ठीक है, इस इंटरेस्ट को भी रिकॉग्नाइज कर लिया, इसको भी रिकॉग्नाइज कर लिया, इसको भी रिकॉग्नाइज, ऐसे कई सारे इंटरेस्ट को स्टेट रिकॉग्नाइज करता है और आपको आईपीसी में या नया बीएनएस में ये सब मिलेगा देखने के लिए. यू विल गेट एवरीथिंग देयर, यू विल गेट मेनी मोर इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड देयर. अब चूंकि स्टेट को प्रोटेक्ट करना है तो स्टेट फियर पैदा करता है, इसलिए स्टेट ने पनिशमेंट की व्यवस्था कर. बट नाउ ए क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू स्टेट, what is the justification for punishment? I got this point that you want to create deterrence in the mind of all wrongdoers and you want to threaten them with this kind of penal consequences that if you commit any wrong I will punish you, behave yourself. स्कूल में खास करके बच्चे क्यों डरते हैं प्रिंसिपल साहब से? कि प्रिंसिपल साहब पनिश कर देंगे, प्रिंसिपल साहब स्कूल से निकाल देंगे, प्रिंसिपल साहब इस एक्टिविटी से मना कर देंगे. सो यू बिहेव प्रॉपरली. यदि आपको फियर ना हो तो शायद आप बिहेव नहीं करते प्रॉपरली. तो स्टेट भी ये फियर सबके माइंड में क्रिएट कर दिया. बट देन स्टेट वाज आस्क्ड ए क्वेश्चन कि एक ही इंटरेस्ट है, हमारी प्रॉपर्टी को छीना गया. अब बात को समझो, या वो जो मैंने सिचुएशन आपको पहले बताया, क्या सिचुएशन बताया कि वन पर्सन इज हर्ट, ही इज बैडली इंजर्ड, बट इन दैट केस नो क्राइम. इन सेकेंड सिचुएशन देयर इज क्राइम. सो व्हाट आई सेड, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर मेकिंग द सेकेंड सिचुएशन ए क्रिमिनल रॉन्ग? क्या बताया था मैंने? इंटेंशन. तो स्टेट से पूछा गया कि ये जो सिचुएशन 1 था और ये सिचुएशन 2 था, in both cases injury was similar. So in first case you did not punish, in second case you are punishing this. So how will you justify this? So state ne kaha, see, this is very simple, as I have also described that here there is intention, criminal intention, and here there is no criminal intention. So criminal intention is the justification for punishment. Here it is criminal intention. And this is justification for. So unless and until there is criminal intention, how will you punish? Injury to दोनों में भी same injury. But in this one you are punishing, in this one you are not punishing. Why it is so? This is civil, this is criminal. Why it is so? So I hope I have told you that this is the reason. So you have little bit idea, little bit. I am not saying that you will have clear idea. What is legal wrong? What is civil wrong? What is criminal wrong? You understand little bit? Oh, yes or no? Now, we'll take up the question later on. I hope everybody understands what I have said. Legal wrong, civil wrong, criminal wrong. You understand that why punishment? I have also told you, my dear friend, that see, state recognizes various interests, not all interests. If you look into IPC right now, if you look into BNS right now, it recognizes various interests. You have interest as an individual, you have interest as a member of society, you have interest as a member of a state. So different kind of interests are there, and that is why you will find that there are different kind of offenses also. Different interests or different offenses. You will find that body related offenses, because in body we have interest. You will find property related offense, because in property we have interest in our property. Similarly, you will find that offense against marriage, because in marriage also there is interest. I'll tell you, don't worry. Anyone else, any question please? Feel free to ask question.
The point which I have spoken, if you do not understand anything, you can ask me right now. I will answer this. Any other question? Legal wrong and criminal wrong. All right. Any other one? Please. Many people have joined late, so they may not have heard me earlier. So, if they have any question, please. Anyone who has okay, see, my dear friend, I just said that legal wrong can be distinguished from moral wrong. I gave you an example that, see, you are not giving food to a person who is dying of hunger. Is it a legal wrong? Are you under duty, legal duty to provide him food? No. He is unknown to you. But humanity says, morality says that you should have provided him food because he is dying. But if you do not give him food, can you be held liable in law? The answer is no. So it may be moral wrong but not legal wrong. So when it will become legal wrong? When there will be law which will describe it as wrong. So there should be law, then only legal wrong. Like if law says that committing murder is wrong, then it is illegal wrong. If law is not there, then it is permitted. Law says that you can't take property of others, and you take property of others without his consent or without her consent, it's a wrong. It's a legal wrong because law described it as or prescribed it as legal wrong. Now legal wrong is father, civil wrong and criminal wrong are their offshoots, like son and daughter. So legal wrong can be either civil, can be either criminal. But when it will be civil, I said, when there is no intention, and when it will be criminal because there is intention. So guilty intention creates a difference between civil and criminal wrong. Legal wrong is father, civil wrong and criminal wrong is the son and daughter. They are children. Now, what was your question? How to identify? There is a question here. How to identify that whether it is innocent act or whether it is a criminal act? So see, we identify anything by deed, not by the word, generally speaking. If somebody has committed murder, if somebody has caused death, A fired a pistol on B and B died then and there. Now A is being prosecuted for death of B. A says, I had no intention to cause death. Can you believe this? The act speaks itself. If you had no intention to cause death, why did you fire on B? No, I was just joking. I can't believe this. Unbelievable. So your act will speak about intention. You can't lie. This is all question of wisdom, and this is all question of practice. I say that I want to teach you the best, but I am not doing this. So just my statement will not do it. I'll have to show that by my act. So speaking will not be believed. Law does not believe this. Law believes only in deeds, only in action. You say that I am very serious student, but I have been taking class for last 5 days. You are not there at all in any class. How can I believe this? And there is no reason for being absent. You are not ill. It was not the fact that you are not aware that the class is not being conducted. You are all aware. Even when you are not attending class, how can I believe? So your intention is very clear that you do not want to attend the class. So you can't lie. It's very difficult. You will learn this when you go further, that there is formula of backward integration. We relate a deed or act with the intention, and that is how we infer intention. This is very simple.
एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं, मेरे से हिंदी में बात कर सकते हैं, मेरे को हिंदी आती है, कोई समस्या नहीं, आई हैव नो इश्यू। Is there any difference in civil wrong and criminal wrong other than intention? Yes, there are many consequential difference. अभी तो आपने शुरुआत ही की है, अभी तो ये कहानी की शुरुआत है, अभी तो आप सब कुछ नहीं समझ पाओगे, बहुत सारे डिफरेंस हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अब देखिए आपको समझ में नहीं आई मेरी बात तो यहीं छोड़ के चले जाइएगा, मतलब क्लास को छोड़ के मत जाइएगा, बस बात को छोड़ के चले जाइएगा क्योंकि देखिए आप उतनी बात समझ पाओगे जितनी आपकी क्षमता है। बुरा नहीं मानना है, हर व्यक्ति अपने नजरिए से चीजों को देखता है। कोई बच्चे, अब जैसे मैं बहुत छोटे बच्चे को आज पढ़ा रहा हूं, तो कोई बच्चा यदि मान लीजिए क्लास में आता है और वो बातें कर रहा है, आपस में कुछ लोग करते हैं, तो उनको लगता होगा कि हम सही कर रहे हैं। यदि उनको ये बता दिया जाता है, उनको पता होता है कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, तो वो नहीं करते, बिकॉज़ कोई ह्यूमन बीइंग गलत नहीं करना चाहता, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उसको पता ही नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं। ही इज नॉट अवेयर। मैं भी बच्चा था, मुझे भी समझ थी, मैं भी यही समझता था, टीचर इज फूल आई एम स्मार्ट, मेरी भी यही सोच थी। तो उम्र के साथ साथ अब किसी ने मुझे एक दिन कह दिया कुछ कि साहब आपने मेरे बारे में ऐसा कह दिया। हमने कहा ठीक है, मैंने कह दिया, यदि तुम ऐसा मानते हो तो मेरे बारे में तुम वैसा ही कहो जैसा तुम्हारा दिल करे और उसको अखबार में छपवा देना। आई हैव नो इश्यू, यू हैव टेकन रिवेंज, दैट्स ऑल। अननेसेसरी बातों में जाने से क्या फायदा है। उसने कहा आप मुझे एक दिन फिल्म दिखाने ले गए थे, आपने तीसरे को बता दिया फिल्म दिखाने ले गए। हमने कहा तुम ऐसा करो, मेरे को तुम फिल्म दिखाओ दूसरे ही दिन और बता देना 10 लोगों को फिल्म दिखाया, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं इन अनर्गल बातों में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरी समझ अलग है। तो जैसे जैसे आपकी समझ परिपक्व होती है, आपकी सोच बदलती जाती है। इसीलिए कभी कभी आपकी सोच आपके पेरेंट्स से मैच नहीं खाती और आपको बिल्कुल लगता होगा कि मैं सही हूं और ये बिल्कुल गलत है। आपको लगता होगा बिल्कुल गलत है, इनकी सोच तो बिल्कुल ही गलत है, और ये लगेगा। दिस व्हाट इज रियलिटी। तो जैसे मुझसे आप पूछते हो ना सिविल रॉन्ग क्रिमिनल रॉन्ग में क्या अंतर है, मैं बताऊं, मैं यदि बोलूंगा तो आप हंस दोगे, कोई अंतर ही नहीं है। भाई क्या बोल दिया आपने, इतने सारे अंतर अभी आप कह रहे थे। अभी जैसा अस्तर होगा, आप देखिए मुझे अब यहां पूछोगे तो बोलेंगे हाँ बहुत अंतर है, फिर यहां जाओगे तो पूछोगे तो बोले हाँ कुछ अंतर है, यहां बोलोगे तो बोलेंगे अंतर ही नहीं, खत्म हो गया अंतर। सर ये 3 स्टेज में 3 अलग अलग बातें होती क्या? हाँ हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। जैसे तुमने मुझसे पूछा आर यू ए फादर और ए सन, विल से आई एम फादर एज वेल एज सन। सर ये कैसे हो सकता है, बाप भी बेटा भी? नहीं है ना, मैं अपनी मां का बेटा हूं और अपने पुत्र का पिता हूं, चेंज हो गया। So this is same with civil wrong, criminal wrong. I tell you, the same wrong can be civil, the same wrong can be criminal. Oh sir, ऐसा भी होता है? हाँ। Suppose there is a death of a laborer in a factory. Now he can claim compensation under some law, and compensation is generally awarded in civil wrong. But if there is negligence of employer, employer can be charged under IPC under the relevant provision, maybe under section 304A of IPC. Are you getting the point? So the same wrong can be criminal civil. But if you ask me a question, जो आपके लिए है, जो आप जानना चाह रहे हो, क्या अंतर है, तो मैंने बताया आपको, सिविल रॉन्ग में डैमेज देते हैं, क्रिमिनल रॉन्ग में पनिश करते हैं। सिविल रॉन्ग में पनिश नहीं करते, उसमें आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। क्रिमिनल रॉन्ग में गिल्टी इंटेंशन है, सिविल रॉन्ग में नहीं है। क्रिमिनल रॉन्ग में इट्स ए पब्लिक रॉन्ग बिकॉज स्टेट कम्स इनटू क्वेश्चन, बट इन सिविल रॉन्ग इट्स ए प्राइवेट रॉन्ग बिकॉज यू विल फाइल ए केस। अब इसीलिए देखो, वेन एवर यू विल गो टू ए सिविल कोर्ट, You will bring all evidence yourself. तुम अपने से साक्ष्य लाओ, अपने से एविडेंस लाओ, अपने से डॉक्यूमेंट लाओ और कोर्ट को बताओ, दिस इज द पॉइंट। If there is a dispute between you and me that this property belongs to me or belongs to you,
So this is a civil dispute relating to ownership of this property. So here I will file my case and you will defend your case. You will file your document, I will file my document, I will bring my own witness, I will bring my own evidence, you will bring your own evidence, your own witness. But in criminal law, victim does not do anything. It is state who will come on behalf of the victim. विक्टिम को कुछ नहीं करना है. कौन लाएगा उसके पक्ष पे गवाह? पुलिस वाला. पुलिस वाला कौन है? स्टेट है. कौन उसके तरफ से वकील आएगा? प्रोसिक्यूशन. प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील है, सरकार आएगी, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि सरकार ने पहले ही उससे कह दिया था कि तुम्हारा कोई भी इंटरेस्ट मारा जाएगा तो सरकार आएगा, स्टेट आएगा, पहले ही कह दिया था उसको. क्रिमिनल लॉ का बेसिस यही है. इफ एनीबडी हार्म्स योर इंटरेस्ट, आई विल कम टू योर रेस्क्यू एंड आई एम गिविंग यू दिस गारंटी. द मोमेंट गारंटी इज इन्फ्रिंज्ड, स्टेट विल कम. And as state has to maintain its guarantee, that is why state has prescribed punishment. कि देखो भाई, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मैं तो राजा हूं, मैं तो तुम्हें दंड दूंगा, आई विल पनिश यू. तो स्टेट अपनी अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए पनिशमेंट का प्रावधान करता है. दिस इज एज सिंपल एज दैट. इज दिस क्लियर? भाई किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल प्रोसीड टू फर्दर थिंग्स. आई हैव एक्सप्लेन लिटिल बिट व्हाट इज क्रिमिनल लॉ, व्हाट इज क्राइम. क्राइम के बारे में भी आपको बता दिया. नथिंग बियॉन्ड दिस. क्राइम इज नथिंग बट गिल्टी इंटेंशन एंड गिल्टी माइंड, जिसको आप लोग लॉ में क्या कहते हैं? मेंसरिया एंड. ये सब एक दिन में नहीं क्लियर होगा, अभी धीरे धीरे पढ़ोगे. मेंसरिया एंड एक्टस रियस. Mens rea is called guilty mind. Guilty mind begets guilty act, and actus reus is called no. Prohibited act or consequence. We use too many Latin maxims in law. तो आपने समझ ली इतनी बातें. अब देखिए, आपको ये किताब भी मिली होगी, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा. इसमें भारतीय न्याय संहिता के बारे में लिखा है. आई होप यू आर ऑल अवेयर अबाउट द नेचर ऑफ क्वेश्चंस दिस डेज, बिकॉज main emphasis of this class will be how to pass the examination, not just to pass the information. So exam को pass करना है तो you will have to solve questions. So these kind of questions you must be aware. I hope. What kind of questions are being asked these days? They will give you passages, and from these passages they will ask you question. But for reading these passages, you will have to understand the legal language. And if you have awareness of the concept beforehand, I hope it will be very fruitful and wonderful for you to attempt in examination, so that you can do it easily. Because if you are exposed for the first time to those terms, you cannot do it. It's very difficult. If you are spoken common intention, similar intention, same intention, you will be little confused. What is this common intention, same intention, similar intention? This is the question. Question number 1. I was just reading this before before this class. I saw that this is the question asked in your examination. No? Common intention, similar intention, 2020 passage 1. So if you want to understand these terms, if you want to read this passage well,
you should have awareness of legal concept in advance. Then only you can understand and you can practice these passages also. So what we'll be doing? We'll be doing this twin work in the class. One, that will be explaining all these legal concepts in the easiest possible way. And then the second, we'll be doing practice on the basis of passages which have been asked and which may be asked. Like we have just formulated a question here on Aparajita bill, which has been passed recently in West Bengal to curb the menace of rape offences. This is in consequence of the gruesome rape and murder committed against that resident doctor, now, and which raised enormous hue and cry in Bengal, and it became a political controversy. Still investigation is going on. You might be reading in newspaper every day, it is appearing there. No, CBI is not acting properly or something like that. You'll find this kind of information there. Or Kolkata police is not acting fairly. We are not concerned with that, but we are concerned with this fact that what is happening in our society, because that will be the question in examination. So when I see this first chapter of your material, Bharatiya Nyaya Sanhita. Now you are aware of this thing that Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Saksha Adhiniyam and Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, these are all of 2023. This is Act 45 of 2023. It is Act 47 of 2023. This is Act number. So obviously, no, this is 47. So this is 46. These are not to be remembered at all, but I remember it, so I shared with you. Because I deal with these subjects, I have already taught BNS and BSc, I am still to teach this BNSS, so I will remember this because I do a lot of work in this. We have published Bare Act, as I have already told you, of Ambition Publications. So we do a lot of work there, so we remember that generally. You are not supposed to remember this, but you are supposed to know certain things. So your preparation is preparation of awareness rather than memorizing. It's not like university examination where you are required to memorize many things. It is not just question of memorization, it is question of understanding more and less memorization and less information. So understanding is key, but that understanding will come only when you read a lot and when you understand a lot. Otherwise that understanding will elude you, avoid you, evade you. So must be careful about this, that understanding is key in this preparation. And obviously when you go to examination, you are required to attend these questions, so you understand how questions are framed and how questions are attempted. So we'll train you for both, how questions are framed and how questions are attempted. That will be the main focus. But before that you will be required to be aware. Now if I speak mens rea or actus rea, you should be knowing that what I am speaking about. If I tell you snatching, so you should know, you should be able to relate what is this snatching all about. If I say dacoity, you should be able to know what is this dacoity. So you will have to have a little bit awareness of all those concepts. Now see, recently, this IPC, you are aware that this was drafted way back in 19th century, around 1833, etc. Law Commission was formed under the chairmanship of Thomas Babington Macaulay, where there were other people also like Anderson and Millett, etc., who framed this Indian Penal Code. And this Indian Penal Code got assent of that Governor General at that time in 1860 on 6th October, which remained in force for almost 162 years. Because IPC came into force on 1st January 1862. So since 1st January 1862, it remained in operation till this 30th June 2024. Now then 1st July 2024, we got this new BNS. Earlier it was IPC.
But does it mean that the IPC has evaporated, BNS has come into operation? No, it doesn't mean this. BNS will apply to any offence which has been committed since 1st July. After 12 in midnight, 1st July, after 30th June. So whatever crime is being committed after 12th in the night of 30th June, that will be covered by this BNS, because this is the law now. But before this 30th June, 12 in night, it will be covered by IPC. So that is the bifurcation. Now once you understand this, then you move further. You will raise question that when there is change in law, that you have brought new criminal law, BNS and BNSS and BSA. So what has been the change? I tell you, you think of yourself. You change yourself sometime. But does it change your essential, substantial character? No. You remain the same person. Suppose you have changed your hairstyle. You are somehow influenced by Beckham or maybe Cristiano Ronaldo or maybe somebody else. There may be many people, or maybe Albert Einstein. So you have changed your hairstyle. Does it change your character? Does it change your identity? Does it change your personality? The answer is no. Same is the case here. They have changed the section number. They have merged many sections into one, and they have done a lot of this harakiri, but it doesn't change the essence of penal code. What it does, I tell you, it brings certain new offences. It enhances certain punishment. It prescribes a new kind of punishment, community service, you might have heard. So there are many kind of things which have been done. So now, I have given you very basic understanding that BNS does not change IPC at all. See, what was murder earlier is now murder again. What was Dakaiti earlier is now Dakaiti again. So what is the difference? The only difference is that robbery was defined earlier in section 390 of IPC, now it is 309. So this is the change. Earlier murder was defined in 302, rather 300. 302 is punishment section. So murder was charged under 302. Now it will be charged under section 103. 103. Murder was defined earlier in 300, now it is in 101. So this is the difference. उसको बुलाओ, कहाँ है वो सिमरन, क्लास जो चलाते हैं। आपको ना क्लास में मोबाइल फोन बंद करना पड़ेगा, ये ना मतलब मोबाइल फोन ऑन नहीं रहना चाहिए, आप गलत काम कर रहे हैं, बंद करिए मोबाइल, स्विच ऑफ करिए अपना मोबाइल। आपको बताया नहीं गया है क्लास में, आपको ये सब बेसिक चीजें नहीं बताई गई। किनका मोबाइल है जो बज रहा है, बंद करिए मोबाइल, बंद करिए। और किनका बजा अभी, इसके पहले किनका मोबाइल था? You can't concentrate if you are using mobile phone. नहीं कर पाओगे फिर। Mobile is a huge distraction these days. If you want to achieve something in your life,
switch off mobile and switch on yourself. Otherwise, you will be switched off, your mobile will be switched on. Just believe me, I am telling you. I was telling you about this BNSS, so this BNS. I told you that there is no change as such. And how many of you are aware of law, or how many of you have been reading about law? थोड़ा बड़ा इंटरेस्ट है लॉ में, और आप लॉ का समाचार पढ़ते हैं या जानते हैं कुछ कुछ? कितने लोग ऐसे हैं क्लास में? कुछ लोग हैं, बहुत लोग नहीं। तो आप जरूर जानते होंगे, आप आगे पढ़ेंगे और भी, कोई भी लॉ स्टैटिक नहीं हो सकता। इट हैज टू चेंज विद द इवॉल्विंग सोसाइटी। और जैसे जैसे आप आगे जाओगे, मैंने कहा ना आपको कि आप देखो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपकी सोच बदलती जाएगी और आपकी चीजें और परिष्कृत होती जाएगी और रिफाइंड होती जाएगी। तो जैसे एक बड़े विद्वान आए थे, रॉस्को पाउंड साहब, उन्होंने कहा लॉ शुड बी स्टेबल नॉट स्टैटिक। जैसे मैंने कहा ना कि आपने मोबाइल बजाया, आपको बहुत अच्छा लगा, हम नहीं बजा सकते क्लास में, हम नहीं बजा सकते, हम नहीं कर सकते, हमारी सोच नहीं अलाउ करती मुझे। क्लास में आने के पहले मोबाइल फोन बंद, छोड़ देना मोबाइल फोन बाहर। हमने अपना नियम बनाया, क्योंकि मुझे भी क्लैट एंट्रेंस देना है ना, मुझे भी पास करना है एग्जाम। मैं सीरियस स्टूडेंट हूं। इफ आई एम नॉट सीरियस, माई स्टूडेंट विल नेवर बी सीरियस। सीरियस का मतलब नहीं चेहरा बना के बैठ जाना। मैं भी गाने सुनता हूं। सीरियस का मतलब मैंने ये नहीं कहा चेहरा बना के बैठ जाना और हमेशा ऐसे ही बैठे रहना। क्या हो गया भाई, सीरियस हो गया हूं, क्यों? क्लैट निकालना है। I did not. Serious means serious in effort, not on face. And you be serious, मतलब serious in effort. Are you serious towards your goal? Serious effort में होना है, चेहरे में नहीं। आप जब भी किसी को क्लास में बुलाते हैं तो पहले उनको बताना होगा कि क्लास में क्या क्या नियम है। इनको पता ही नहीं, मोबाइल फोन बजा रहे हैं। तो आपने इनको इन्फॉर्म नहीं किया है कि मोबाइल फोन क्लास में नहीं बजना चाहिए, और अलाउ भी नहीं करना है मोबाइल फोन। बल्कि ये तो बच्चे, इनको तो इंश्योर करना चाहिए कि इनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो क्लास में। हमारे जुडिशरी के बैच में कल किसी ने बताया, हमने पूछा मोबाइल फोन ऑफ कर दिया अपना? उसने कहा नहीं सर, हमने कर दिया साइलेंट पे। हमने कहा साइलेंट पे वाइब्रेशन नहीं होगा, साइलेंट पे तुम डिस्टर्ब नहीं होगे, जब फोन बजेगा तो डिस्टर्ब तो हो गई होगे। ये बात क्यों कही गई कि अर्जुन ने जब तीर चलाया तो उसको सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, उसको कुछ और दिख ही नहीं रहा। इट इज क्वेश्चन ऑफ कंसंट्रेशन। इफ यू डू नॉट हैव कंसंट्रेशन, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, यू कैन नॉट रिसीव 100%। आप रिसीव तो करोगे बट 100% कभी नहीं होगा। So you will have to concentrate. Suppose I am talking to you right now and I start looking into my phone. What will happen? My concentration will be not 100% at all. हो ही नहीं सकता. It cannot be. So this is my sincere advice. Rest you are intelligent. So what I was talking about? I was talking about this BNS. I said there is no change as such. There are certain changes. क्या changes है मैं आपको बताता हूँ बहुत ब्रीफली। हालांकि आपकी लेवल में अभी इतनी बात, अभी इतनी विशद विवेचना की आवश्यकता नहीं है, बट यू शुड हैव अवेयरनेस। एक बात तो पता चल गई, 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया। इज दिस क्लियर? मैंने आपको कहा पहले आप आईपीसी पढ़ते, आपको बैरक भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, बट आप यदि देखते पहले आईपीसी तो यू शुड हैव फाउंड देयर 23 चैप्टर्स इन 511 सेक्शंस।
Now there are only 20 chapters in 358 sections. कितने sections हैं हम? 358, 358, and chapters are 20. Now, will you not ask me a question, sir? Does it mean that three interests have gone away? You have just talked of interests. No, it's not like that. I'll tell you. I told you that there are many things which are merged together now. अब जैसे पहले आप पढ़ते बॉडी रिलेटेड ऑफेंसेस, so you could have seen it in 299 to 377, but now body related offenses are only in section 100 to 146. 100 to, this is in chapter 6. Earlier it was in chapter 16. सर आप सब याद करते हो क्या चैप्टर? नहीं, कुछ नहीं करने. There is, I tell you, there is a magical formula which you adopt. If you adopt, you will find that you can memorize anything and manything in law without making any effort. But then I tell you, no university, no college will tell you this. I will tell you this. Mind you, I will tell you this. How to memorize all these sections, all these, not only sections, I tell you, even clauses you can memorize. You understand human anatomy? अच्छा, सबका सर ऊपर ही है? Tell me yes or no. सबका पैर नीचे? Very good. वैसे ही हर एक्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन होता है. एक सेक्शन में भी यदि सब सेक्शन से लिखे उसका भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट दैट विल टेक एनॉर्मस टाइम. आप उतना समझने जाओगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, और मेरे पास रहोगे तो मैं आपको एक दिन में समझाऊंगा. मैंने क्या कहा? पहले किस चैप्टर में था? 16. अब कहां है? 6. ऑफेंसेस आर रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी. पहले था 299 टू 377. अब कहां है? 100 टू 146. बट आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आपको समझना है. तो मैं आपको समझाऊंगा. मैंने बता दिया कि देखो कोई खास चेंज नहीं है, बट आपके मन में एक सवाल आएगा. You are saying that there is no much change, then why change? Why change then? I tell you, the first and foremost reason of this change is that you wanted to set the effect of British regime. Oh, it is British made legislation, now it is Indian legislation. But in the name of Indian legislation, you are retaining the same legislation which was made by Macaulay. You have not changed even the word and illustration. So how it is India made? You are borrowing the same thing. But चलिए कहने के लिए हो गया. कहने के लिए हो गया. So this is the one reason that British enacted this law way back in 1833 to 36, I said, which got finally the assent of Governor General on 6th October 1860, which was enforced in India on 1st January 1862, and it remained in operation for such a long period of 162 years around, since 1862 till this 2024. So you kept it in operation for almost 162 years, which is a long span of time. So obviously, society has changed a lot. Obviously, there have been many modern concepts which developed. Obviously, there have been many modern incidents which crept up, and that is why you wanted to include them as well. You have no provision there. So what will you do? So let us bring a new law. So we brought a new law. Then you thought that now when we are changing the law, why not to make it proper? Let us arrange it. Like you write a class notes. So you arrange your class notes. First this point should come, then this, then this, then this, then this. You speak and you write in an organized manner. You write in a systematic manner. Legal wrong, civil wrong, criminal wrong, then crime, then constituents of crime. You do not reverse the order. So that is what we are doing in this criminal law also. I tell you, if you read earlier law, यदि आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है
तो आप मेरी बातों को सिर्फ सुने और समझे और जाने, समझे नहीं भी तो जाने। जब आप पहले का लॉ पढ़ते तो आपको दिखता ना हर क्राइम के पीछे जनरल प्रिंसिपल होता है। जैसे मैंने कहा मेंसरी और एक्टर सीरियस दो एलिमेंट होते हैं हर क्राइम के, एक जनरल प्रिंसिपल है। अच्छा यदि मेरे पास मेंसरिया नहीं तो मुझे पनिश करोगे नहीं, ये एक जनरल प्रिंसिपल है। तो जनरल प्रिंसिपल को हमने पहले शुरुआत में लिखा, लेकिन कुछ जनरल चीजें बाद में चली गई, जैसे अटेम्प्ट इज ऑल्सो जनरल, इट कैन बी अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, इट कैन बी अटेम्प्ट ऑफ डकैती, इट कैन बी अटेम्प्ट ऑफ रॉबरी, इट कैन बी अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट, इट कैन बी अटेम्प्ट ऑफ रेप, इट कैन बी अटेम्प्ट ऑफ एनीथिंग, बट यू रोट इट इन द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 23। तो अब हमने क्या किया, ये सारे जितने जनरल प्रिंसिपल थे इसको शुरुआत में डाल। तो जो अटेम्प्ट का 23वां चैप्टर था पहले, 23वां अध्याय भारतीय दंड संहिता में, उसको अब हमने यहां शुरुआत में लिख दिया। तो हमने कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस जब चेंज कर ही रहे थे तो ये सब भी कर देते। अब हमने क्या किया, अब जैसे आप पहले पढ़ते एक्सटॉर्शन, सुना है एक्सटॉर्शन क्या होता है? नहीं सुना है? भगवान न करे इसका भी सुने आप। एक्सटॉर्शन क्या होता है बताते। जैसे फोन आया आपको, किसका किसका फोन है? दाऊद इब्राहिम का। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए? एक्सटॉर्शन के लिए। 50 करोड़ आज के आज भेज देने का, नहीं तो कल तुम्हें 6 इंच छोटा कर देंगे। व्हाट इज एक्सटॉर्शन? अब इसके लिए पहले क्या था, देयर वर सेक्शंस फ्रॉम 383 टू 389, 7 सेक्शन, but now it has been clubbed in one section, that is 308. That is 308 of BNS. तो 7 सेक्शन को एक बना दिया। क्यों बना दिया? Because extortion was defined in one provision, but punishment were written in many provisions. 6 provision तो punishment के थे। Unnecessary. Unnecessary. It enhances the length and breadth of IPC, and the reader becomes little bit concerned. So many sections. अरे कुछ नहीं है, so many sections तो है ही नहीं। तो जिस दिन आपको बहुत ज्ञानी बन जाओगे आप, आपको लगने लगेगा कि सब चीज में एक ही कॉन्सेप्ट है। चाहे आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, लॉ पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, सब में एक ही बात लिखी होती है। आपको लगेगा ये कैसे, स्कूल डेज में पढ़ा हिस्ट्री बड़ा बोरिंग था, मैथमेटिक्स मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, ये तो कभी समझ में ही नहीं आया, कहने सब एक ही होता है। लॉ इज फुल ऑफ मैथमेटिक्स, लॉ इज फुल ऑफ हिस्ट्री, लॉ इज फुल ऑफ फिजिक्स। अरे लॉ में फिजिक्स भी है सर, तब तो मैं नहीं पढ़ूंगी। नहीं, वैसा वाला नहीं है, वैसा वाला नहीं है, बट है। तुम्हारी आंखें यदि ठीक होंगी तो दिखेंगी। यहां भी कॉज एंड इफेक्ट है, यहां भी न्यूटन्स लॉ है, यहां भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, यहां भी एक्सेलरेशन होगा, सब होता है। मैं कराऊंगा ना, आई विल टीच यू फिजिक्स ऑफ लॉ, आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ लॉ। दैट विल टेक लिटिल बिट मोर टाइम, नॉट एट दिस जंक्चर। वो LLB जब आप करने लगेंगे तब, अभी नहीं, अभी तो आप परेशान हो जाओगे। आपने मुझसे सवाल पूछा व्हाई BNS, आई हैव आंसर्ड लिटिल बिट, बट देयर आर मेनी आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। डिटेल में पढ़ना है तो फिर मेरा बैरेक्ट खरीद लेना, पढ़ लेना, ठीक है। वो अभी इस क्लास की सीमा में नहीं है, दैट इज नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। नाउ लेट अस ईट दैट मच फूड विच वी कैन कंज्यूम। उतना ही भोजन करो जितना, if you eat more, it will lead to indigestion. सर ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा, मैं तो पढ़ा दूंगा, मुझे तो पता है, मैं तो ये काम करता हूं, बट तुम पढ़ के क्या करोगे? तुम्हें तो नहीं पूछेगा एग्जाम वाला ये। बट आई टोल्ड यू इन न्यू BNS देयर आर 20 chapters, 358 sections,
So you raised a question that does it mean that three's interest evaporated or it has not been there? No, nothing like that. So then why the chapters less in number? बहुत सारे चैप्टर जैसे कॉन्स्पिरेसी इट वाज अ सेपरेट चैप्टर, attempt it was a separate chapter, it has been clubbed into one with abatement, conspiracy, abatement, attempt together. सर सबको साथ कर दिया गया? yes. Why they have been kept together? There is a reason behind that. Why we are sitting in this class together? We are all law students, we are all preparing for law entrance, so there is similarity between them. Class means homogeneity, so there is homogeneity in these three crimes. And what is that homogeneity? क्या similarity है? I tell you, the similarities that they are all inchoate crimes. When I say inchoate crimes means what? Inchoate. You will understand legal words slowly and steadily. Don't be in hurry. Incomplete crime. Attempt, which does not result into crime. Abatement, that I have abated you to commit crime, that is what is abatement. And conspiracy, I did not commit crime but I conspired. So these are all inchoate crimes. They have been put together in one chapter now. So chapter decreased. Now earlier it was, now if you see attempt, it was chapter 23 in IPC. Abatement was this chapter 6, and conspiracy was this, no rather this I wrote wrongly. Abatement is chapter 5 and conspiracy was 5A. But now this is clubbed together in one chapter. So this is how we have decreased the number of chapters, but that is not the matter of discussion here. Now apart from this, what you did in BNS, let me go to that now see, this is just for reading purpose. This is also it may be little bit relevant for our understanding, and this is very much relevant. This is very much relevant. This is very much relevant. So these are relevant things and these are not so. Just for reading. This is for understanding. Now the material will be available to you, so you should not worry at all. Came into operation on 1st July. Rest information is not relevant for you. This is just for reading purpose. You can read this. This is a story, nothing great. I don't think these are any question. This is useless for exam, but for information it's good. You read it. What is the purpose? Consolidate, amend the provisions. Now that is what I told you, whatever is relevant. The Bharatiya Nyaya Sanhita is subdivided into 20 chapters, 358 sections. Rest you read, not for exam.
Now you see, your objective is to lay what is right and what is wrong and to lay down the punishment for committing such wrong. In criminal law, the intention of committing the crime plays a huge role in deciding the liability. Have I said this or not? There are 4 stages of committing the crime: intention, preparation, attempt and commission. Now see, here is a question which I will raise and answer. It says liability in crime arises when one goes beyond the stage of preparation and attempts to do the illegal act. The Bharatiya Nyaya Sanhita starts with an introduction, provides explanation and exceptions used in it, and then lays down a wide range of offences. This has no meaning. Now you just remember this much and you just see this much. Rest you know. Now, why you have written that liability in crime arises when one goes beyond the stage of preparation and attempts? So, it means you want to say, you listen to me carefully, my dear friend. See, in these 4 stages which you have written: intention, preparation and attempt and commission. Intention is generally not punishable. And my dear friend said that how will you know? Many people may be speaking wrong, they may be lying. So, we do not punish intention. And I am not aware what is your intention. With what intention you are attending the class, am I aware? I am not aware. I am not aware. I am not aware that who is serious how much. Yes, but I am aware of your seriousness by looking to you. Then are you listening to me carefully? Are you properly adhering attention to my words or not? Are you sincere, serious in your behavior or not? I can guess. I may not be exact, but I can tell you who is serious and who is not. Suppose somebody is sitting and he is now doing something on his mobile. So he is always looking like this and he is doing something. Or suppose somebody is talking to his friend sitting beside him. So I understand that he is not. His action speaks of intention. Action speaks of intention. So, I will not know of intention unless until I get an action. So, action does not come here, it comes here and it comes here. Now, you may ask me a question, why not in preparation? In preparation also there is an action. I may agree, but I must tell you that this is question of crime. Crime is a serious affair where you are punishing something, or you are punishing some act or some activity. You are punishing a human being. So you need clear-cut justification. You cannot punish anyone at your whims and fancies. I think that you have committed a crime, so I will punish you. It's not that era of Badshah and kings. We are governed, guided, goaded today by rule of law. Lex, rex. What is lex, rex? Law is king. Lex, L-E-X, lex. Law is king. Not king is law. That was earlier era. Rex, lex. So now we are lex, rex. Law is king. So I will punish you only if I am sure, certain, clear that you have committed something wrong. Guided, goaded, commanded by guilty mind. So I needed to have an action on your part. Preparation may not give that me. Preparation may not give me that clarity. Why? I tell you. Suppose you go to a shop and you buy a gun. How will I know that you have bought a gun for defense or for offense? How will I know? Is it possible to know that? Tell me, yes or no? Gun can be used for offense also, and gun can be used for defense also. Many people will possess a gun just for the defense. They know that there can be some bad elements who can call him and who can
run behind him for money. आप क्लास लेके नीचे नहीं उतरे, आ गया, लाओ मिस्टर रंजन, कितना कमाए हो आज? मेरे पास तो कुछ है नहीं, ले लो, कोर्ट ले जाओ. आई डोंट हैव मनी. But think of the situation where you buy a gun. Can you be sure that it is for offense? No. That is why, see, intention I am not sure. What is going in your mind, I cannot be sure, certain. How many of you are really believing what I am saying? How many of you are really concentrating to listen to me, what he is saying? How many of you are trying level best to understand whatever is being said in the class? I cannot be sure and certain. I can't be. Though it is a fact that most of you, or almost all of you, are doing this, are listening to me carefully. But even then I may not be sure. So I can't punish intention. See, if you are going to be a student of law, you will have to develop reasoning, to work on your reasoning. Be it legal reasoning, be it logical reasoning, be it mathematical reasoning, be it any reasoning. And that is why in your question every reasoning is asked. Because law is nothing but reasoning. Now preparation, you said, I am very serious. How can I believe this? Unless and until, no, you prepare very hard. You have read all book of CLAT. You have solved all questions, but you do not appear in the examination. What is the use of this preparation? It is useless. So unless and until you attempt anything, your all effort is useless. तैयारी तो बहुत अच्छी करता हूं, बट जब एग्जाम डे आता है इतना घबराता हूं कि एग्जाम हॉल में जाता ही नहीं. क्यों तैयारी करते हो यार? फिर मत करो. एग्जाम फोबिया. एग्जाम तो हंसते खेलते जाने का है. शहीद थोड़े होने जा रहे हैं, बलिदान थोड़ी देने जा रहे हैं अपना. इट इज जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ एग्जाम. जो गो एंड अपीयर. Develop that attitude. So in preparation you are not sure, certain, but in attempt you are certain. Suppose I have fired a gun shot against X and X could not die because he was wearing Billa number 786. बचा लिया उसको. देखा था ना फिल्म कुली? नहीं देखा था? कोई नहीं, डोंट वरी, बचा लिया. लेकिन अटेम्प्ट तो हो गया ना, फायर तो कर दिया. अब व्हाट इज लेफ्ट? नाउ इट इज प्रूव्ड, इंटेंशन इज देयर. व्हाई डिड यू फायर ऑन हिम? मैं देख रहा था निशाना सही लगता कि नहीं. ओह, आई सी, आई सी, आई सी. मतलब निशाना देखने का यही तरीका था. तो तुम फिर जाते हैं ना निशाने लगाने के लिए. वहां इतने सारे ओलंपिक ट्रेनिंग के लिए बने हुए हैं, जाते वहां निशाना लगाते, देखते कैसा निशाना लगता है. तुमको भी मनु भाकर बनाते हैं. Are you getting the point? So attempt is nothing but indication of intention of committing a crime. And we are here sure, certain, clear, cogent. I do not entertain any iota of doubt in my mind that this person is entertaining a wrongful, guilty intention, which is called in legal language mens rea. And that is why he must be punished. And that is why attempt is punishable. And when the crime is committed, what is left? So see, you do not move forward unless until you understand anything. And the only relevant thing. Don't go in irrelevant things. That is not usable. Now this is description of different crime against body, property, public order, economic crimes, crime against women, crime against children, other crimes.
Now, murder, culpable homicide, not amounting to murder, kidnapping, theft, extortion, robbery, dacoity, riot and affray, cheating and counterfeiting, rape. I'll explain these all words later on when I come to these offences. This is very simple, by the way, don't worry. I'll explain it in simpler words. I can't show you practical because I can't commit murder. Otherwise, I would have done it. So, I'll explain it in theory, but I'll explain it in such a way that you will understand it. Culpable homicide. Culpable means criminal. Homicide, homicide, pesticide, insecticide. You must have heard. So, homicide, human killing. As simple as that. Culpable, culpable, that is punishable. This is how words are written. Theft, extortion, robbery, dacoity. I'll explain to you when I'll reach there. All right. Definition of crime. See, crime as a punishable, as an act punishable by law is forbidden by statute or injurious to the public welfare. Nobody is going to ask you this question, what do you mean by crime? This is just for a description. No question is framed like this in your exam, that please define crime, so that you are required to remember this. Don't do this kind of now wasteful exercise. You are just required to be aware. I tell you, this is just written for the purpose of your reference, nothing beyond that. I have given you better understanding of crime. Crime is basically a legal wrong, I said, where state punishes the wrongdoer. You understand it in very simple terms. Where state punishes the wrongdoer and state prosecutes the wrongdoer. So see, crime is a legal wrong pursued by state, prosecuted by state, punished by state. If you do not understand, I'll explain it again. Crime is what I said, crime is a legal wrong which is pursued, P-U-R-S-U-E-D. I am giving my own definition. I am not less than Blackstone, though you may not believe this right now. But I tell you, crime is a legal wrong pursued by crime is a legal wrong pursued by state. So state will pursue it, not you, not an individual. State will investigate, state will report. Police wala. Who is police wala? Prosecuted. Judiciary is also a state system. Yes, is this clear to everyone? Pursued, prosecuted and punished.
कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन इन योर माइंड प्लीज? आपकी क्लास कितने बजे तक चलती है? तो बताया नहीं ना, तो बताना था। बताते तो हम ब्रेक ले लेते। आप अभी ब्रेक ले लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इतने लेट से ब्रेक लेके क्या करेंगे आप? तब तक आप सवाल पूछ लीजिए। भाई क्राइम का ये डेफिनेशन आपको समझ में आया नहीं आया? मैं जो पूछना चाह रहा हूं भाई, बार बार ये आ जा रहा है, ऐसा क्यों है? कैसे सेट किए हो? क्या है ये? तुम तो देख ही लोगे, मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं? तुम तो सब देख लोगे भाई, तुम तो देख ही लोगे, तुम्हारा तो ये काम है। बट मेरे को क्यों समस्या आ रहा है? काम तो छोड़ ही देते हैं। टीचर तो खुद बना लेगा, लेकिन विद्यार्थी जब तक सवाल नहीं बना पाएगा तब तक क्लास का कोई यूटिलिटी नहीं है। So you have to train a student in such a way that they should be able to solve the question. आप तो बना ही दोगे, आप तो बना ही रहे हो, तो ये तो कर ही रहे हैं काम, ये तो कर ही देंगे, मैं कब करूंगा? You should train me, सर आप अपने से करो। हमारी क्लास देखिए, आप अभी पता नहीं कभी कोचिंग किए हो नहीं किए हो, आई एम नॉट अवेयर, बट कोचिंग मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए कोचिंग? आई टेल यू, coaching means the teacher should make a student so competent that teacher is able to do it, and now student is able to do it, teacher is not required. Student खुद अपने आप करे। I should be able to produce Karna and Arjun in this class, and I am a teacher. Otherwise तो ठीक है, पढ़ा रहे हो कोई भी, ये सब तो कोई भी पढ़ के पढ़ा देगा, आप भी पढ़ के, मैं आपको दे दूंगा मेटेरियल, ये आना क्लास में, ये मेटेरियल ले लेना, पढ़ देना। What are you doing? I'm teaching students for CLAT LLB. Okay, great. So this is not the teaching. This is not teaching. This is not teaching. ये आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी 90% यही होता है। टीचर कम्स एंड ही विल रीड समथिंग समथिंग, यू विल राइट समथिंग समथिंग, एग्जाम में वही सवाल आना है, रट के लिख देना है। तो दिस इज नॉट द मेथड ऑफ लर्निंग। मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्राइम को पनिश क्यों करते हो, तो तुमने कहा जी उसमें गिल्टी इंटेंशन होता है, तुम्हें स्टेट की गारंटी है यदि स्टेट पनिश नहीं करेगा तो स्टेट विल नॉट बी एबल टू मेंटेन दैट, इसलिए पनिशमेंट का प्रावधान। सिविल रॉन्ग में भी पनिश कर देते नहीं, सिविल रॉन्ग में स्टेट की गारंटी नहीं है। सिविल रॉन्ग में स्टेट ने नहीं कहा था कि हम तुम्हारे लिए किसी को पनिश करेंगे, नहीं कहा था। तो ये सब आपके पढ़ने के लिए, आप पढ़ते रहिएगा, ये मेरे काम का नहीं है। मेरे काम का जो था मैंने बता दिया, मेरा डेफिनेशन पढ़िए। अब देखिए यहां लिखा है देयर आर 4 एलिमेंट्स, ऐसे ही लिखा है, ह्यूमन बीइंग होगा तभी क्राइम होगा, मेंसरिया शुड बी देयर, एक्टर सीरियस इंजुरी, बट ये भूल जाओ, इट इज नथिंग, इट इज मेंसरिया प्लस एक्टर सीरियस, वेरी सिंपल। ये सब किताबी बातें लिखी जाती है, लिखते रहो, ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता। Now I explained to you, my dear friend, this maxim. This is relevant. Actus non facit reum nisi mens cetria. Stages of crime, you understand: intention, preparation. Preparation in certain situation punishable. Why we have written this? I tell you, my dear friend. See, in certain situation, preparation can be punishable. Now you may ask a question: why it is so? I'll tell you the answer. Preparation is generally not punishable. Not punishable. But in certain situations, it may be punished. Why? Because in certain situation, preparation clearly indicates criminal intention.
Why I am not punishing intention? I am not sure what is your intention. I can't prove it unless until act is done. Tell me, can I understand without asking you whether you understand this or not? Whether you are taking this class positively, negatively? I am not aware. How can I know this? I can know only by your act. When I asked you question, oh my dear friend, did you enjoy the class? Yes sir. इसका मतलब समझ में आ गया पूछा, हाँ ठीक ही लगा सर. इसका मतलब he did not enjoy the class. चूंकि बैठे हैं तो क्या करें, कैसे चले जाए, टीचर को बुरा लग जाएगा. नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, because I don't need any certificate. बट आपके दिमाग को कैसे पढ़ेंगे हम विदाउट आस्किंग यू? तो मुझे पूछना पड़ेगा. इसलिए इंटेंशन को हम पनिशेबल नहीं बनाते, क्योंकि इंटेंशन आपका मुझे पता है ही नहीं. जब तक उसको साबित ना किया जाए, कोर्ट में उसके बारे में ना बताया जाए, कुछ हम जानते ही नहीं है. प्रिपरेशन मैंने कहा ही, आप बंदूक खरीदने गए, आप क्राइम के लिए खरीदने गए, आपने डिफेंस, मुझे कैसे पता चले? आप एक लाठी खरीदने गए, अभी किसी को मारने के लिए यूज करोगे या आपने चलने के लिए यूज करोगे? हाउ विल आई नो? इज इट पॉसिबल टू नो? अब तुम एक कॉपी खरीदने गए, whether you will write law answers on the copy in the copy or whether you will write conspiracy in the copy, how will I know? नहीं नहीं सर, आपको नहीं पता है. ये मैडम ना कॉपी खरीदा कॉन्स्पिरेसी के लिए. How will I know? So I can't punish. But the moment attempt is done, act is shown. तुमने गोली चलाई थी ना, वो मरा नहीं, अटेम्प्ट है. मर जाता तो कमीशन ऑफ क्राइम हो जाता. तुमने गोली चलाई ना, अब तुम अटेम्प्ट में आ गए, अटेम्प्ट टू मर्डर. चलो भाई इसको 307 में डालो. So that is clear. But in certain preparation, when what will happen, I tell you. See, if you understand the fundamental, you understand law. पनिशेबल में भी कुछ पनिशेबल, कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा दिस एक्ट इज क्रिमिनल. पनिशमेंट ही, प्रिपरेशन ही क्रिमिनल है. हाउ? Suppose I am teaching you IPC. In IPC there are many offences. One such offence includes this offence also. You just see this. I take an example. Why you wrote this? Suppose I raided at your house and I found that you have this instrument, machine for counterfeiting of coins, counterfeiting of government stamps. Then I asked you a question, my dear friend, why you are having these machines? You said, sir, you don't know, I teach law. Okay, you teach law. So I want to explain this to my students, how counterfeiting is done. Can anybody believe this? Why a teacher will have a machine or instrument for counterfeiting of currency or counterfeiting of government coins when he knows especially that keeping this machine is also illegal? Why will he have? Now he has explanation and he says, I am having this because I want to teach my students this offense and I want to show them practical. So sir, will you show the practical to the student by killing somebody? That this is how murder is committed. Can this be believed? Can this be accepted argument? It is not an acceptable argument. It means that you are keeping these instruments for doing something criminal. So law doesn't entertain any doubt. So the moment I do not entertain any doubt, the moment I am clear, listen to me, the moment I am clear, the moment I am certain that this instrument is used for such and such wrong purpose, I will punish you even at the stage of preparation. Generally not, but especially in certain cases like this. See, preparation for counterfeiting of coins or government is. Why are you having this machine? You are saying that I am having this machine to teach my student counterfeiting of currency coins.
Can this be plausible argument? Can this be acceptable argument? So this shows clearly your wrongful intention, and that is why I will punish you. Is this clear? So that is why in certain cases of preparation, only in few cases, preparation is generally not punishable. Now you read all this, you have read. They are all basic information which you are reading right now. The offences can have, it says intra-territorial application, every person shall be liable to punishment under BNS, not otherwise, for every act or omission contrary to the provision thereof which he shall be guilty within India. So anybody who commits crime in India, intra-territorial, in India, he will be punished in India. Who are you? I am an American, I am a Britisher, I am a Briton. I don't mind. You have committed crime in India, so Indian law will apply. Intra-territorial, within territory, interstate bus terminus from one state to another state. Intra means within. Intra means within. Within Indian territory, all offences committed by anyone. Now you will ask a question. Sir, what is the reason behind that? We are punishing American, you are punishing a Britishers? Because he has committed crime in my territory. He has violated my law. He has challenged my authority. I wanted law and order to prevail in India. He committed crime in India, and so he has created law and problem in India, law and order problem in India. He has created, or he has rather now threatened my guarantee. He has questioned my authority. It is Indian state, it is Indian government. So we will punish him. Who is he? So does it mean that you will punish Donald Trump and this Joe Biden also? No, they will get immunity. The sovereigns of that country will get immunity. This is based on certain international privileges and immunities which we accord to ambassadors and now ruling class. That will be taught to you separate. Extra-territorial. Now, you tell me one thing, my dear friend. You have come to this class. Whether your parents will regulate your conduct here also or not. Suppose a student does something wrong here. Whether he will be reprimanded, admonished by their parents or not. Tell me. The answer is yes. आपके माता पिता परेशान होंगे, आपको डांटेंगे, डांट लगाएंगे, फटकार लगाएंगे, समझाएंगे, कंप्लेन करेंगे. They are regulating your conduct here also. So wherever an Indian goes, now suppose you have gone to UK to study law further. आपको मन किया कि मुझे जाना, आजकल फैशन हो गया फॉरेन जाना, आपको पता ही है. क्वींस कॉलेज मुझे जाना है पढ़ने के लिए यूके में. या आपका मन किया मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लॉ करूंगी, LLM. नथिंग रॉन्ग, जा सकते किंग कॉलेज भी है, क्वीन कॉलेज भी है, क्वींस कॉलेज मैंने बोला ही, लंदन यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन भी है.
आपको मन के वहां जाना है पढ़ने, आप चले गए और वहां जाके आपने कुछ गड़बड़ कर दिया. Whether BNS will apply to you or not? Yes. Extra-territorial, beyond the territory. Beyond. And on which ground I will punish you? Because you are my national. Any citizen of India in any place without and beyond India, wherever you go, you are under my control. Wherever you go, you are under control of your parents. Wherever you go, you are under control of India. Is this clear? आवाज नहीं आई. Then it says any person on any ship. Here it doesn't say any Indian. See, any person. Person can be British, person can be American, person can be Chinese. On any ship or aircraft registered in India. So ship or aircraft registered in India, so Indian law will apply. Whoever you are. You are Chinese, you are Japanese, you are Singaporean, I don't mind. It is my ship, Indian ship, registered in India, so Indian law will apply. Though ship may be in high seas. Ship was there in Pacific, ship was there in Atlantic, ship was there in Caspian. Ship was there in Indian Ocean, ship was there in Red Sea. Doesn't mind. Doesn't matter. Because it is Indian ship. Ship registered in, and same will apply to aircraft. Aircraft was flying above American airspace. And a Chinese person committed a crime against British person. But the ship, the aircraft was Indian aircraft, Vistara. So which law will apply? Indian law will apply. Because it is Indian aircraft, registered in India. Suppose tomorrow you are intelligent enough and you produce a spaceship. Suppose, like that person is doing. Who is that? Haji? Elon Musk. So you become another Elon Musk and you produce a spacecraft, a spaceship. You have sent a spaceship from here to space. There are few people in that spaceship registered in India. And there also an American attacks a Chinese, attacks a Japanese. Which law will apply? Because it is ship registered in Is this clear? Then it says any person in place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India. Suppose you have heard of cyber fraud, cyber crime today. A person sitting in Chicago, a person sitting in California, listen to me carefully, a person sitting in Beijing, a person sitting in Seoul, a person sitting in Tokyo, they all have a common plan. And they attack computer resource located in India. That Indian government is raising huge money these days by levying GST. So let us take this fund out of India. So they in a concerted, united manner conspire something and take away money from Indian bank. They are sitting where? One is sitting in Tokyo, another is sitting in Seoul, another is sitting in Chicago, another is sitting in California, another is sitting in Beijing, where they will be tried and punished. In India, because they targeted a computer resource located in So did you understand this picture? Crime is decided by the locality of offense, not by the nationality of offender.
Jurisdiction of a crime is decided by locality of offense, where the offense was committed, not by the nationality of offender. What I said? Jurisdiction of crime, that is where it will be tried. Jurisdiction, that is what is jurisdiction, where it will be tried. I said jurisdiction of crime is decided by locality of offense and not by nationality of offender. Not by nationality of offender. Hmm. First case means including the Indian laws, will the other country law will also act on the offense? That will be the domain of that country's law. You are not concerned with that. We are not concerned with that. There can be situation where there will be possibility of application of more than one law. It happens. But we are required to see which law is better suited. See, a question may arise in your court of law. See, you have seen just now this chapter 1, 2, 3. Can you just see the pages of chapter 1, 2, 3? You have just covered chapter 1, 2, 3. We have just read 1, 2, 3. Now it is your job to read this chapter 1, 2, 3. I have given you basic idea only right now. I have not gone into deep detailed analysis. Now once you read this, I will come back to this again, and if there is any question and if I have left anything, I will also see every word written here in your material and I will come back to you. See, in law there can be many situations, like you are sitting here. So whether law of this institution will apply to you or not. Suppose I want to do something which is indisciplinary in this class. So will the management of this institute will punish me or not? Or will treat me accordingly or not as per their rules, regulations? The answer is yes. But suppose I am a student of law and my age is hardly 20 years right now. So my parents will be also disturbed by this fact and they will take appropriate action against me or not. देखो मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा, बदमाशी करने के लिए नहीं भेजा था, तो वो भी आपको पनिश करेंगे, इंस्टीट्यूट भी करेगा. There will be many situations where you will be under this kind of thing. Yes, it can be. And there can be many situations. Suppose a crime is committed in India by a Britisher against a Chinese. Now British government says, you send this person to me, I will punish him because he is my national. I will see him.
Chinese say, no, no, we are very much concerned. How did he hit my national? You send him to China, I will treat him. मैं तो उसको फांसी पर लटकाऊंगा. चाइनीज को कैसे मारा इसने? ब्रिटेन छोटा सा कंट्री है, चाइना इतना बड़ा कंट्री है. चाइना इतना बड़ा कंट्री है, बिलियन ऑफ पीपल आर लिविंग देयर एंड यूके इज हार्डली, यूके पॉपुलेशन आई थिंक 6-7 करोड़ and Chinese population around 140 crore. So they will be really concerned. They say, no, no, you send him to me. I will punish him. Suppose Indian government ने भेज दिया उनको चाइना में, ब्रिटिश को, तो उसको पनिश करेंगे. ब्रिटेन से आपका बहुत सारा रिलेशन है, आप गवर्नमेंट हो यहाँ के, आप क्या करोगे ब्रिटिश नागरिक को? चलो भाई, कौन परेशान करेगा, ठीक है, भेज दिया कि ब्रिटेन के भी साख रह जाए. लेकिन कोई गवर्नमेंट ऐसा भी हो सकता है which will say, I will not send him either to China or to Britain. सर, इंडिया में रहने का, हाँ, वो पीछे बात कर रहे हैं, इंडिया में नहीं है. सबको इंडिया में रहने का, चाइना नहीं जाने का भी. मेरी बहुत इच्छा है, बट मैं नहीं गया अभी, जाऊंगा बाद, क्लास के बाद. नहीं, कंसंट्रेशन नहीं रखेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, आपको भ्रांति पैदा होती रहेगी. अब देखिए क्या हुआ. नाउ इंडिया सेज, नो 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 नो, आई विल पनिश हिम बिकॉज ही हैज वायलेटेड माय लॉ. व्हाई आई विल सेंड हिम टू चाइना एंड ब्रिटेन? सो विच विल बी द बेस्ट? टेल मी. वेदर इंडिया, वेदर चाइना, वेदर ब्रिटेन? इट विल बी इंडिया. व्हाई चाइना? चाइनीज माल ज्यादा यूज करता है. We'll never send him to China. We'll treat him in India because he has violated. And now listen to me carefully. The evidence is here. The witness is here. Where the crime was committed? In India. तो evidence कहाँ मिलेगा? Witness कहाँ है? और ये दोनों भी कहाँ है अभी? It is always easier to punish him here. So this kind of conflict will arise in international arena. But वो IPC का डोमेन नहीं है. Yes, ma'am. हाँ बिल्कुल कहेगा, वो तो कहता ही है. इंटरनेशनल एरेना में तो खूब कहते हैं. अब जैसे कोई भारतीय नागरिक आकर के यूएसए में कराए कुछ, तो इंडिया तो कहेगा भाई इसको भेजो, लेकिन यूएस गवर्नमेंट नहीं भेजेगी. ये तो कंट्री के अपने उस पर निर्भर कर. आप देखो ना, आपके यहाँ आकर के इटालियन लोगों ने मार दिया किसी को. आखिरकार आपने क्या किया? उनको कुछ दिन जेल में रखा, लेकिन आपने वापस भेज दिया. रसिया के केस में आपने यही किया. वो कौन थे? उज्बेकिस्तान, कौन से नेशनल थे जिन्होंने यहां आर्म्स ड्रॉप किए थे? वो रशियन ऑरिजिन के थे, उधर के ही थे कहीं के, उन्होंने भेज दिया फिर इंडियन गवर्नमेंट. तो दिस डिपेंड्स ऑन योर डिप्लोमेसी. It's not always exactly a legal question. It comes in the arena of diplomacy. That just to maintain international relation, you do all these things. But frankly speaking, if the crime has been committed in India, always Indian laws would apply. And law will throw before you variety of questions which are very interesting. अभी तो आपने कुछ नहीं सुना है, कुछ नहीं जानते. ऐसे ना हजारों सवाल आपके समक्ष आएंगे, इसमें क्या करें, इसमें. So law is very interesting subject. और आप वास्तव में यदि लॉ के स्टूडेंट बन जाओगे तो आपको लॉ पढ़ने में इतना मजा आएगा ना कि क्लास में बात कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओ. आपको लॉ में बातें करने के लिए इतनी चीजें, आपकी जो टेंडेंसी ना क्लास में बातें करने की, सब खत्म हो जाएगा. जैसे मेरी हो गई, मैं लॉ से बातें कर रहा हूं. So did you see that chapter number 1, 2, 3? Are you clear that I have dealt with this? अब आपका क्या टास्क है? You go and read it. You go and read it. You try to solve question. आपको भी बहुत दिक्कतें आएगी, but don't worry. मैं हूं ना. हैं? क्या करें? हाँ?
होने दीजिए, कोई नहीं। हम देखिए, हम किताबों से पढ़ाते नहीं, हम किताबों से पढ़े हैं। वो बैग पैक कर ले, अपने आप को भी पैक कर ले, फिर भी मैं पढ़ा दूंगा। वॉशरूम हमने यहां रखा ही नहीं है। सीधा घर जाके हम क्लास में एक बार बैठ गए तो उठते नहीं है। You are so involved in the class that you do not bother about other things. हाँ, अब क्या सवाल है ये बताओ। And if you have any general question for me, if you have any query, any concern, any question, please let me know. भाई कितनी बात आपको समझ में आ रही, पहले तो ये बताओ। हाँ जी, नहीं राइट तो देखिए, राइट हैज वेरियस मीनिंग्स, आई टेल यू। You know right and wrong. You know this? So that is also right. I said you are right. Right. So that is also right. But the question in the context in which you are asking, let me address that one, and I'll tell you that see, right is basically recognition of interest and protection of interest. If it is by morality, it is moral right. If it is by religion, it is religious right. But if it is by law, it is legal right. So if law recognizes, like I said, I have right in humanity to be given food, and you have duty in humanity, duty in morality to give me food because I am dying of hunger. आपकी ये ड्यूटी नहीं है मोरालिटी में, आप मुझे बचाने का प्रयास करो। आपका मैं पड़ोसी हूं और मैं भूखों मर रहा हूं और आपके पास अरबों की संपत्ति आ गई है। कौन बनेगा अरबपति? और आपको अरबों की लॉटरी लग गई है। आपका ये ड्यूटी नहीं, फर्ज नहीं कि आप अपने पड़ोसी को कुछ भोजन दे सके। इज इट सो नॉट? टेल मी यस और नो। नहीं, मोरालिटी की बात कर रहा हूं। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं ना, मेरी बात को ध्यान सुनो, मैं क्या पूछ रहा हूं। तो मोरालिटी में आपको ये बनता है, आपका कर्तव्य कि आप मुझे कम से कम 2-4 रोटियां दे देते खाने के लिए, ताकि मैं भूखे नहीं मरता। लेकिन आप नहीं देंगे तो हैव यू कमिटेड एनी लीगल रॉन्ग? नो, because it is not my legal right, it is not your legal duty, but it is your moral duty, it is your human duty. On humanitarian ground you should have provided me food. So right तो है but legal नहीं है। I have right but I do not have legal right against you because you do not have legal duty, क्योंकि लॉ नहीं कहता कि आप पड़ोसी को भोजन दे। किसी लॉ में लिखा है ऐसा? हाँ, but if it is your parents, if it is your wife, if it is your children, you have a legal duty and they have a legal right. आप उनको नहीं छोड़ पाएंगे। Section 125 of CRPC gives them legal right. They will claim food from you, but never cannot claim from food from. So legal right तब तक नहीं होगा जब तक लॉ उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और लॉ उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अब जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे बहुत सारे लीगल राइट की चर्चा आएगी। अब जैसे आपने कहा अभी अभी, ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया, एक मैंने उसका भी उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति डूब रहा है, आपको स्विमिंग बहुत अच्छी आती है। कौन था? माइकल फेल्प। आप वही है, बट फिर भी आपने उसको नहीं बचाया। कुछ लोगों ने कहा भी बचा तो देते, आपने कहा नो नो नो, मुझे कोई मतलब नहीं। हार्ड हार्टेड पीपल, देयर आर मेनी हार्ड हार्टेड पीपल। आई डोंट माइंड, ही इज ड्राउनिंग, लेट इट हैपन, आई एम नॉट गोइंग टू सेव यू। सो हैव यू कमिटेड एनी लीगल रॉन्ग? व्हाई? बिकॉज देयर इज नो लीगल ड्यूटी एंड ही डजंट हैव लीगल राइट। बट मोरालिटी की बात करें, ह्यूमैनिटी की बात करें, तो आपको करना चाहिए था, लेकिन करना चाहिए था और करना पड़ेगा। दीज आर टू डिफरेंट सिचुएशन। तो लीगल राइट में है कि करना पड़ेगा, उसको लीगल राइट है तो आपको करना पड़ेगा। हस्बैंड को वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लीगल राइट है क्योंकि लॉ उसको रिकॉग्नाइज करता है। जिसको लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता वो राइट तो हो सकता है लेकिन लीगल राइट नहीं बनेगा।
कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, मजा नहीं आया। कहते यस सर समझ गया, तो मजा। वेरी गुड, वेरी नाइस। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? द फाइट विद राइट। देखिए, लॉ जिनको पढ़ना है उनको ना मैं 2-4 और सजेशन दे देता हूं। एक तो आपको ना न्यूज़पेपर पढ़ना हो, यदि आप वास्तव में एलएलबी एंट्रेंस, क्लैट, आईलेट की तैयारी कर रहे हो, कोई भी लॉ एंट्रेंस, आपको ना न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। और न्यूज़पेपर में आपको देखो, आपको क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, पैसेज बेस्ड। न्यूज़पेपर में भी बड़े बड़े न्यूज के पैसेजेस होते हैं, उसको पढ़ करके आप एनालिसिस करते हो, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, व्हाट दिस पैसेज इज सेइंग, एंड स्पेशली लीगल पैसेजेस न्यूज़पेपर में बहुत सारे आते हैं, किसी किसी दिन तो 10-10 आते हैं। और आप देखो जीके में वैसे पूछते हैं, एक पैसेज दे देंगे, उसी से रिलेटेड सारी चीजें पूछ देंगे। अब अभी अपराजिता बिल आया वेस्ट बंगाल में, कितने लोगों को पता है? रेज योर हैंड्स, ऊपर तक हाथ उठाएंगे। अपराजिता बिल, ऊपर तक हाथ उठाओ। बहुत सारे लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, आपको पता होना चाहिए। दिस विल बी क्वेश्चन इन योर एग्जाम। हमने एक पैसेज पे क्वेश्चन बनाया, इसी पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, आपको दिया जाएगा, आप बनाइएगा इसको। द अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल प्रिपेयर्ड बाय वेस्ट बंगाल इन 2024 seeks to introduce the death penalty for rape, पैसेज 1। तो हम भी ऐसे ही काम करेंगे, हम भी ऐसे ही पैसेज बनाएंगे। कितना बड़ा पैसेज बनाया है, एंड देन द क्वेश्चन फॉलोज। So you will have to develop this habit of reading passages and understanding it. तुम जितना ये करोगे, तुम्हारा क्लैट एलएलबी का एग्जाम बहुत आसानी से निकलेगा। ये क्लैट एलएलएम में भी ऐसे ही है, अभी एलएलएम में भी ऐसे एग्जाम ले रहे हैं आजकल, बिकॉज दे वांट टू सी वेदर यू अंडरस्टैंड द थिंग बाय रीडिंग इट और नॉट। लॉ में यही तो सबसे बड़ी समस्या है, हम लोग समझ ही नहीं पाते केस को, तो सॉल्यूशन क्या बताएंगे। और रिसेंट चीजों से तो हम बिल्कुल टच में नहीं रहते, हमें पता ही नहीं था देश में क्या चल रहा है। सो दैट शुड नॉट हैपन विद अस। इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज सफिशिएंट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।